हाँ स्टार्ट कर दिया है। कर दे। Okay, I have started. कोई लाइक सिंक करने का जरूरत नहीं है। So we do हेलो sync हेलो um and Do you guys remember the time Maggie was banned? I do. What is your memory of it? हाँ, Yes. I think मैं नानी के घर था उस टाइम पे. बाप नहीं मतलब I mean not the exact date but उस duration में. 9/11 की तरह बता रहे कहानी जैसे लोग अपने 9/11 के It was एक्सपीरियंसेस pretty बताते हैं. shocking. Okay, just to remind you, Maggie, if not, it is one of my favorite foods, if not the favorite food. I have said this more than once on this podcast, Varun, but हाँ I'll हाँ repeat it once again for Varun. स्कूल में आउट ऑफ नोवेयर मैंने इससे पूछा था एज अ philosophical question, I guess, कि what do you love? इसने मुझे बोला I love two things the most in my life, mom and Maggie. ओके। Wait, what about the rest of your family then? Uh, Maggie comes above all. तू तू बोल क्या बोल रहा था तू? तो वो बैन हो गया एंड इफ यू नो कि घर पे जो एल्डर्स होते हैं जनरली बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होता है बाहर के पैकेट वाले फूड के लिए. उनको लगता है सब जंक फूड होता है बाहर का कुछ भी लें. एंड टू सम एक्सटेंट दे आर राइट कि हाँ इंस्टेंट नूडल्स हेल्दी नहीं होता है बट कोई भी नाउ नूडल्स देन हेल्दी नहीं क्या होते. I mean, the restaurant में खाते हैं I think they are pretty good. Noodles are not नहीं meant to be healthy. I They mean they are Indian noodles they जो are बनाते हैं street food they they are are that is not healthy but क्यों? Why? What's the आई मीन difference between वो वाले noodles and street food वाले noodles? They are all empty calories. They all नहीं I अब mean प्लस वेजी मोस्ट ऑफ वाला द अगर कोई नूडल्स तो खाएगा लाइक नूडल्स मोस्ट ऑफ द नूडल्स तो मैदे का बनता है ना, तो वो तो और ये होता है ना yes, like लाइक it's वो काफी खराब misconception है that uh, some things are bad just for being processed. नहीं but I do think कि नूडल्स हेल्दी हो सकते नहीं होते ही अगर प्रॉपरली बनाओ तो उसको. I mean they are in the similar हाँ आई मीन fashion हो सकते कि हैं, बट आई डोंट थिंक जो हम लोग नूडल्स कंज्यूम करते हैं या फिर जो पैकेज में आता है मैगी वगैरह वो हेल्दी है. हाँ आई डू अग्री कि मैगी हेल्दी नहीं है और 90% ऑफ द स्ट्रीट फूड में जो नूडल्स मिलता है दैट इज नॉट हेल्दी नूडल्स बट कैसे हेल्दी हो इफ यू सकता है? एक्सप्लेन इट टू मी. उसमें कितने सारे वेजिटेबल्स डलता है तो एक अच्छे रेस्टोरेंट्स इतने नूडल्स ट्राई करते हैं. वेजिटेबल्स नहीं डलते उसमें. When you're आई मीन considering किसी चीज की health, you consider like I think you would usually consider like is one of the common goals for people is to not get too fat, like so like not consume too much calories. So when you're considering the health of a certain food, healthiness of a certain food, I think you would consider उसका जो भी desirable qualities हैं to its calories, उसका ratio.
And but noodles तो in अच्छी no नूडल्स खाते हैं. world will they achieve that. Like what I do not usually like about these ideas is people trying to make certain stuff healthier, usually just to feel mentally better about eating what they're doing. But in the process, a lot of times they also make the dish slightly worse, and they do not even fully enjoy what they're having. Like it's just a very unnecessary thing people have, like an obsession with अगर making जो नूडल्स का बात करें, इज इट ओनली लाइक इंडियन वाले नूडल्स? क्योंकि लाइक बहुत सारे कल्चर्स सारे में तो होता है ना, जैसे वियतनाम का फा हो गया, या फिर लाइक जापान में भी होता है कि लाइक पानी वाले नूडल्स, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल्ड. what do you mean? लाइक बहुत ब्लैंड टाइप से बनाते हैं, कुक करते हैं, बट फिर हाँ ज़्यादा सीजनिंग भी नहीं होता, एंड दे सर्व्ड विथ लाइक कोल्ड वाटर और समथिंग. लाइक एक बार हाँ शिनचैन में देखा था, वो सोबा याद एग्जैक्टली. आ रहा है सिर्फ. सोबा कहते हैं शायद उसे, but हाँ, what are नहीं, you सोबा इज बकव्हीट नूडल्स, बट लाइक वो सोबे लाइक आइस आइस वाटर बाथ पे ये रहता है वो. ऐसा ही कुछ आइस नूडल्स. बट व्हाट्स योर पॉइंट? आई एम लुकिंग इट अप. तेरा पॉइंट क्या है? क्योंकि दे माइट बी फुलफिलिंग लाइक नॉर्मल नूडल्स, बट उन पे उतना कैलोरीज आई डोंट थिंक होता है, क्योंकि उतना अननेसेसरी स्पाइसेस वगैरह सब नहीं होते उसमें ना. But I found out those noodles are called somen. But what I'm going to say is I don't think that spices में कभी भी इतने calories होते हैं. If you're eating sabzi roti, you're consuming calories through roti, not सब्जी में भी होता है calories, उसमें oil वगैरह है, but majorly you're consuming calories through roti. And even in noodles you're not consuming it through the broth या उसमें जो भी veggies है. You're consuming the calories through the noodles, and noodles are the one constant thing in all kinds of noodles or pasta. बट आई वुड लाइक टू डिसएग्री कि दे उनका रेशो हेल्दी तरफ नहीं होता, बिकॉज इफ़ यू ओनली कंज्यूम वेजीज वो कभी उतना फीलिंग नहीं लगता. अगर आप सिर्फ खाने में वेजीज खा रहे हो तो नूडल्स जनरली मेरे हिसाब से अच्छा बैलेंस करते हैं. अगर तुम जैसे मैं बोला कि 90% इंडियन स्ट्रीट नूडल्स जो मिलते हैं दैट आर नॉट हेल्दी, बट इफ़ यू ईट एट अ गुड रेस्टोरेंट जहाँ पे ऑथेंटिक नूडल्स देते हैं वो ईस्ट साइड टाइप का, they do maintain a good balance between veggies and noodles. I I mean, जैसे मैं have वरुण के साथ गैंगटॉक में वो hmm, रामेन खाया था, वेज रामेन. was that felt healthy? मैं उसके वेजेस खत्म नहीं कर पाया था. Uh, At that time I was a little disappointed, but looking back I disappointed in the did noodles or yourself? in the noodles क्योंकि मैं रामेन पहली बार खाया था वहाँ पे, तो I was भाई expecting. तूने रामेन नहीं खाया था, कितनी बार बोलूं मैं, तो थुप्पा खाया था. नहीं नहीं, उनका वो दे वर लेबलिंग इट एज रामेन, बट इट वाज फेलिंग इन बोथ डिपार्टमेंट्स, खिलाया रामेन एंड ऐसे थुप्पा. थुप्पा. Do you like थुप्पा, Varun? हाँ, लाइक हम जैसे कॉलेज के एक पास में एक ढाबा टाइप का था, वहाँ पे खाए थे, वहाँ पे उतना अच्छा नहीं था. बट जब रिसेंटली हम लोग फिर लाइक लास्ट सेमेस्टर गए थे, तब बहुत एक रेस्टोरेंट मिला था जहाँ पे बहुत अच्छा लगा था. लाइक उद्दू बोला था हर रोज चलने को Yes. वहाँ पे. Yes, तो it was really good. I think हाँ. मैं बीमार पड़ गया था दूसरी बार खा के, उसके बाद नहीं खाया. हाँ. I really want to try good thuppa, but I've tried it a few times. I've not liked it till now. Anyway, I disagree with you both on the subject, but let's get back to Maggie. Hmm. हाँ, तू तो तू अपना like what 9/11 I was saying experience. कि हम्म. पहले बाहर का पैकेज फूड एल्डर्स को जनरली
उसको अनहेल्दी बोलते थे, अब उनको एक वो मिल चुका था ऑफिशियल स्टैम्प टाइप का कि हाँ देखो इसको बैन कर रहे, इतना खराब है ये हेल्थ के लिए। आई वॉज रियली डेवास्टेटेड कि हाँ मेरा फेवरेट फूड मैं नहीं खा पाऊंगा। आई थिंक उसके बाद भी खाया था उसको ओकेशनली लाला। व्हाट अबाउट यू? वरुण, ओके, अनपॉपुलर ओपिनियन। मेरे को मैगी उतना अच्छा नहीं लगता। what do you like then? but but that's only if it's prepared like without any, like अगर strictly जो out like as it's meant, अगर वैसे cooked किया गया without any extra veggies or anything, तो I don't like Maggie that much. That's something I But like about अगर like Maggie. और भी veggies के साथ, then only it's Like how कि क्या customizable उस it पे is. Mm-hmm. can't you just say that about every other instant noodle though? No, but there's this entire culture around. Like you can say that about anything, but Maggie is something that there's an entire culture around it. Everyone has their own recipes for it. It- Hmm. It's synonymous to instant noodles in India. हाँ, बोल क्या बोल रहा था? वरुण? हाँ हाँ नहीं, हाँ वही बोल रहे थे like अगर bland noodles में, because I like top ramen more. Oh, I for years I had developed a strong preference. कौन से वाले? There are two primary top हाँ, ramen एक के करी वो वाला आते हैं और एक और एक आई हाँ, गेस एक एक मसाला करी और एक है, नॉर्मल वाला था ना। एक करी और हाँ एक हाँ मसाला है ना, आई थिंक ऐसा कुछ है. हाँ Which do हाँ, you यप। prefer? करी इज नाइस बट लाइक मेरे को नॉर्मल वाला ज़्यादा बेटर लगता है। Uh, आई मीन I आई विल बी prefer हैप्पी विद curry. बोथ ऑफ देम। I really developed it, like I liking for the curry flavor uska. But talking about customizability of Maggi, I've tried doing that with top ramen ka curry flavor. It does not. Uh, there's not a lot of room for customizability in that flavor. मतलब अच्छा नहीं बनता उतना. So I guess there is something to that. Uh, anyway. आई डू हैव समथिंग टू ऐड टू Mm-hmm. दैट। हम्म जैसे तुमने बताया तो मैं टॉप रामेन प्रेफर करता था मैगी के ऊपर। मैगी में ही उनने एक एट सम पॉइंट शुरू करा था उनकी और फ्लेवर की वैरायटी निकालना, फिर नंबर एक था ग्रीन चिली, हम्म एक था बर्न गार्लिक, और ऐसे दो तीन और थे। मेरे को ग्रीन चिली और बर्न गार्लिक, स्पेशली ग्रीन चिली बहुत अच्छा लगता था। वो उसको आई थिंक थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी वो वाले फ्लेवर्स, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो। देख मुझे नॉर्मली खाना है, मैं नॉर्मल फ्लेवर खाता था, बट फॉर अ चेंज वंस इन अ वाइल मेरे को वो खाना अच्छा लगता है। बट आई थिंक अब वो बंद हो चुका है। मैं शॉप में आके बहुत बार पूछा आई थिंक बहुत टाइम तक, बट वो नहीं मिला मेरे को कभी वापस। I think I remember those flavors. उनके ad आते थे ना पहले बहुत, जब when they released it. हम्म। Hmm. आई गेस अभी दूसरे फ्लेवर्स भी तो आ रहे हैं, लेकिन आई गेस वो वाला नहीं आता अब। How how long do you remember the ban being? कुछ मंथ्स का था मे बी, आई डोंट नो। Mm-hmm. Varun? हुआ क्या था सर उसके बाद? आई हैव नो आइडिया। Um, like, uh, hmm. When I tried thinking back, मुझे लगा एक आध साल का होगा, like almost a year, but इतना लंबा नहीं था. Uh, it ban start हुआ June 5th 2015 को, and Maggie returned to shelves on November 2015. June, July, हम्म just a few months. But
the thing is, me and a lot of other people did not even notice the ban but we knew हाँ. about it, but everybody has Maggie stocked in their homes. हाँ, exactly. Mhm. So they, yeah, and I don't remember people being particularly horrified by the idea of Maggie. They still continue to eat it. जो उनके रखे हुए packages थे. उसका एक्चुअली बैन का वो था क्या बेसिस, मतलब उनमें Uh, ऐसा कुछ था कि वो लेड I, था उसमें, I if I remember like remember. unsafe level हाँ, of हाँ, ऐसे. lead and मैं अभी गूगल कर रहा हूँ तो it says lead and MSG. The MSG part sounds a little weird because the whole thing about uh, MSG being wrongfully being accused of being harmful. It's like sort of a uh, uh, anti-China ideology, I think. I'm assuming it's that's where it comes from. Have you heard of the idea कि like MSG is bad for you? मैंने सिर्फ तेरे से सुना. हाँ. Uh, नहीं, MSG इसलिए बोलते ना क्यों, because like it literally has no nutritional value. but You're just consuming. but it's pretty much like salt. हाँ, Salt yeah. has no nutritional value. You eat your food with I salt, have no idea. and That's what that's I've one of the heard. reasons, Uddu. That's one of the reasons with Chinese is considered unhealthy. ऐसा उसका इतना स्टिग्मा है अराउंड स्ट्रीट चाइनीज, उसमें वो लोग भी put MSG to enhance the flavors, which is जब तक तूने मेरे को बताया नहीं, तब तक मैंने MSG ये वर्ड सुना भी नहीं था. uh, it's हाँ, एक्चुअली essential. हम भी कॉलेज जाने के बाद सुना Hmm. था. Like it's an extract from seaweed, so like it's and उसका salt जैसा they make a dehydrated thing powder जैसी, and and they yeah like it's used in chips a lot, all kinds of chips. I think India mein it's not used in chips. uh, they because of the stigma against it, India में कुछ और अलग taste makers use करते हैं, but I have noticed in the chips यहाँ पे they still use MSG. Anyway, Oh. I would like to introduce Varun, the guest of this लेट इंट्रोडक्शन हो रहा the है. guest of this episode. अच्छा, wait. I तुम लोगों ने इंट्रो नहीं किया क्या वैसे? yeah, उतना I thought we दिन. would start with a small conversation about Okay. something. मैगी. So Varun is Uddu's friend from college. We have played, हेलो. all three of us have played games together in the past, including उसका नाम क्या था, Chain Together and Lethal Company. Uddu, why don't you Backrooms. introduce Varun? Backrooms. Backrooms too. How do I introduce him? तो ठीक है, मैं पहुंचा कॉलेज. उसके पहले मेरे और को ये तो origin story बताने लग गया. I was expecting something philosophical. बता. तो हम कॉलेज आए थे, आई थिंक आए थे सेकेंड ईयर के मिड में. उसके पहले ऑनलाइन चल रहा था कोविड के कारण. आई हैड सीन हिम, लाइक वो टीम से मीटिंग होती थी. आई सॉ हिम, बट यस, हमने ऐसे कुछ इंटरेक्ट नहीं करा कभी ऑनलाइन ज़्यादा.
Did you तो interact with anyone online this time? Like before going to college, no, did you know each other? But each other means not specifically each other, but other people. Did you make acquaintance with other people through WhatsApp groups and all? Like हमारा WhatsApp groups था, but I don't think Udesha either of us like sent a message even. Are you saying something, Varun? तेरी आवाज नहीं आ रही है. हाँ, वो ऐसे कि like हमारा WhatsApp group तो था, but I don't think either one of us even sent a message in the WhatsApp group. उद्दू, is it me या उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है अभी कुछ? मेरे को भी वही सेम Oh, लगा था कि okay. Um, so Varun, did you make any acquaintance through that medium college जाने से पहले? Like, I'm just wondering how that experience was before ever joining the college. कहाँ गया? like बस I guess हाँ he's बस fixing the Teams ज्वाइन internet. करके तो उद्दू, अच्छा okay. oh, what, what's happening? हाँ, I guess पर delay हमारा इस पे तो इसलिए like I'm saying something and then like 2 seconds later you guys are reacting to that. Okay, okay. Go on, तू बोल दे. तो वो से कि तो like I don't think I even sent a message in the WhatsApp group. The only interaction I had was कि हमारा एक I guess कोई presentation था, उसमें मैं और उद्दू थे. We had no idea, और फिर like yeah, I think 3 or 4 semesters later मेरे को randomly वो PPT दिखा, और इसको हम खोले तो उसमें देखता रहे उद्देश्य था इसमें मैं ILP का था ना वो, ILP का नहीं क्या PPT. था वो like something अरे इंटेलेक्चुअल copyright laws वाला प्रॉपर्टी, जो हाँ इंटेलेक्चुअल हाँ 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 प्रॉपर्टी. हाँ yes yes intellectual property yes. ये How did उसका you two पीपीटी meet? साथ में करा था. तो हम दोनों का सेम सेक्शन था. उसमें भी आई डोंट थिंक हमारा सेम सेक्शन होने के बाद भी हमने डायरेक्टली ऐसे इंटरेक्ट करा था अंटिल एक ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, एंड आई थिंक साथ में हम ऐसे ही कोइंसिडेंटली साथ में बैठ गए थे हम. आई थिंक that's how we met. तू और पुलक ऑलरेडी साथ में थे, if I remember Hey, correctly. I'm surprised तेरे को उतना याद है. I have no idea. मेरे को बस याद है कि हाँ I guess पुलक एक और हमारा म्यूचुअल फ्रेंड जो लाइक उद्दू से बात किया था, और हम उसके साथ लाइक पहले से थोड़ा सा दोस्ती हुआ था, तो इसलिए उद्दू से ऐसे मिले थे रैंडमली. एक सेकंड, तू तो ऑलरेडी पुलक तो रूममेट ही था ना एट दैट पॉइंट, तो तुम दोनों तो ठीक है, बहुत पहले से नहीं अब फ्रेंड्स हैं. नहीं मैं रूममेट नहीं था वो हाँ लाइक मेरा रूममेट आई हैव नो आई गेस वो ज्वाइन ही नहीं किया था कॉलेज स्टार्ट, या फिर आई गेस लीव चेंज कर लिया था, तो आई वाज रूममेटलेस, और वो भी रूममेटलेस था. फिर बाद में वी डिसाइडेड टू गेट अ रूम टुगेदर. हाँ सुशील तेरा उस पॉइंट पे दोस्त था ना, आई थिंक ऑलरेडी. हाँ वही लाइक बहुत हमारा जो एंटायर फ्रेंड ग्रुप है आई ओनली मेट बिकॉज आई मेट पुलक. बिकॉज रैंडमली जब पहला दिन हम कॉलेज आए थे, ही मैसेज इन द ग्रुप कि कौन कौन कैंपस में है, तो आई रिप्लाइड, और फॉर सम रीज़न वो मेरे ही रूम में आके नॉक किया, बोला चलो डिनर करने चलते हैं. और उसके बाद से एक फिर मिनट, थ्रू हिम कोई जान ना पहचान वो नॉक कर चल डिनर कर देंगे. लाइक उसको लाइक उसे देखे भी नहीं तो कैसे दिखता है, वो बस नॉक किया, लाइक अच्छा तुम ही हो ये, हाँ बोला हाँ, बोले ओके चलो. और फिर वो बोला कि उसका एक फ्रेंड था सुशील, और उसके बाद फिर उसी से वो उद्देश्य से बात किया, तो इसलिए उद्देश्य से भी मेरा भी बात हो गया. आई डोंट थिंक मैं उससे पहले बात करा था पुलक से, जैसे तू बोल रहा है. आई थिंक तुम दोनों से पहले एक साथ ही पहली बार बात करा था मैं. और बिकॉज सुशील का रूम मेरे जस्ट सामने था, तुम लोग सुशील को लेने अच्छा आते थे, तो हाँ इसलिए आई हाँ थिंक फॉर दैट रीजन मेरे को फिर तुम साथ में लेके चलते थे ऐसे लंच और डिनर के लिए. कुड बी.
तो बहुत हेजी हो चुका है मेमोरीज। मेरे को अभी इतना नॉस्टैल्जिया हिट करा बिकॉज वो मेरा पुराना रूम था, राइट? मेरा अभी मैं रूम चेंज कर चुका था। हाँ। पुराना रूम और उसमें क्या हुआ था। हम्म, ये 3 साल हो गए उसे हुए हुए आई थिंक। चिंता मत कर, अभी कुछ ही टाइम में 10 साल हो जाएंगे। एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन पहले सोच रहा था कि आई थिंक तेरे को मिले हुए मेरे को 10 साल हो चुके हैं अभी हाँ, अबाउट। आई गेस अराउंड 10 साल हो गए होंगे। I mean, it's crazy to think कि 10 साल पहले we were in class 7th grade. We were in I 8th was in, grade. we were in 9th grade. हाँ 9th grade. Similar time Hmm. stamp. तो Anyways, तो वहाँ से मिले और फिर ये मिले हुए आई गेस तब से। Conjoined together, yes. So how have you guys been doing अभी? मस्त एकदम बढ़िया। Well, Except apart from Bangalore traffic, I'm doing fine. how are you like traffic other than traffic? How are you finding Bangalore? For context, It's nice. Like the uh, uh-huh. for context, Varun recently moved to Bangalore for the first time for a Yes. job. हाँ तो लाइक इट्स इसका द थिंग आई लाइक द मोस्ट अबाउट बैंगलोर इज द वेदर, क्योंकि वो अभी तो बहुत गर्मी भी नहीं है बहुत ठंडी भी नहीं है, तो इट्स लाइक नॉर्मल वेदर। Hmm. लाइक बहुत लोगों को देखोगे कि दे गोइंग अराउंड इन शॉर्ट्स लाइक हाफ टी शर्ट्स, और फिर नेक्स्ट पर्सन यू सी कि वो जैकेट पहन के घूम रहा है फॉर सम रीजन, बट स्टिल बोथ ऑफ देम आर कंफर्टेबल। उद्दू का पैराडाइज। यस, कोलकाता बहुत गर्म था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और सिर्फ गर्म नहीं वो ह्यूमिड था। तो वहाँ पे वैसे मैं अपने जो मेरा फ्लैट था, मैं 2 लोगों के साथ शेयर करके रह रहा था उस फ्लैट में। वो बिना कपड़ों के घूमते थे। द ओनली थिंग दे वोर वर अंडरवेयर, जस्ट अंडरवेयर पहन के वो घूमते थे पूरे घर में। बॉक्सर्स या चड्डी? चड्डी। That's not acceptable. तो चड्डी पहन के कौन घूमता है? That's what they did. मैं भी घूमता हूँ, तो बॉक्सर्स पहन के घूमता एक्चुअली हूँ। कोलकाता में आई थिंक इट्स प्रीटी कॉमन। I mean, अगर like residential area में you'll go outside, you can see like 2 or 3 people in their Yes, underwear. yes, exactly. Two or three people in their underwear? Yes. हाँ. Do you guys wear chaddi or boxers? चड्डी। चड्डी. पिछले साल के ड्यूरेशन में I completely moved to boxers. I no longer have any chaddis. I tried boxes, but वो कुछ ज़्यादा ही free feel होते हैं, if you know what I mean. Yes. मैंने बॉक्सर आई डोंट थिंक अभी ट्राई करा है। No. Boxers तूने कभी ट्राई नहीं किए? नहीं। हाँ, interesting. I never had box. I don't think I can go back to chaddis now. Varun, you were telling us about Bangalore. हाँ वही बस वही ट्रैफिक का ही है, बाकी सब तो बहुत अच्छा है। लाइक How's work? आई मीन हाँ लाइक ऑफिस एरियाज में तो लाइक अच्छे से मेंटेन किया गया है, बट द मोमेंट यू गेट टू द रेजिडेंशियल एरियाज इट्स ऑल यू नो मैड मैक्स। वर्क तो अभी
ज़्यादा कुछ हो तो नहीं रहा अभी। हमारा स्ट्रीम्स लाइक एलोकेट हुआ था तो सब कोई ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट मेरा कोई काम नहीं था तो आई हैड नो आइडिया कि क्या करना है। मैं सीनियर्स भी कोई बता नहीं रहे, ये बोल एक जन बोल रहा है वो करो, दूसरा जन बोल रहा है ये करो, एचआर बोल रहे घर पे रह जाओ। क्या? और घर उसके बाद पे फिर रह जाओ? नहीं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में हाइब्रिड वर्क मॉडल है ना, तो शी वाज लाइक कि हाँ बस 2 दिन आना वीक में और अभी चल जाओ घर। What do you prefer? तो मंडे को आई मीन आई प्रेफर ऑन प्रेमिसेस द एंटायर टाइम बिकॉज घर पे आई बोर हो जाएंगे। तो आई मंडे को स्टिल जस्ट टू बी सेफ आई वेंट टू ऑफिस, नया ऑफिस था। तो वहाँ पे द एंटायर डे द ओनली थिंग आई डिड वाज प्ले पूल, टेबल टेनिस, फूसबॉल ट्राई किया वहाँ पे, और बस पूरा कैंपस घूमा। How's the campus? TCS Bangalore. कैंपस तो अच्छा था, लाइक कैंपस एज इन इट वाज बेसिकली एक पार्क बना हुआ था, टेक पार्क बोलते हैं, तो उसमें मल्टीपल कंपनीज के बिल्डिंग्स थे। तो लाइक बीच में Ah, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स वगैरह सब कुछ थे। nice, तो वही सब nice. घूम के आ गए वापस। Have you had anything interesting in Bangalore? खाने का? नॉट रियली। लाइक यूजुअली तो अभी ऑफिस का ही बहुत ये था, लाइक गेटिंग यूज्ड टू दिस न्यू लाइफस्टाइल। लाइक बाहर भी हम लोग ज़्यादा घूमने नहीं गए हैं अभी तक, क्योंकि कहाँ आई गेस ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, बट फिर भी Yeah, लाइक अभी भी विस ऑल गेटिंग यूज्ड टू इट। makes sense. Uddu, how are you finding Indore? I think he was telling about कि हाँ ऑफिस एरिया अच्छा रहता है, रेसिडेंशियल एरिया में एडमिट्स फ्री टाइप का लगता है। आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग फ्यू डेज अगो कि मैं अभी कोलकाता में था। मेरा जो फ्लैट था वो काफ़ी ओपन एरिया में था, आई यूज्ड टू टेल यू। और अभी मेरा जो घर है वो भी आई मीन जब पहले बना था वो काफ़ी ओपन था एरिया, बट अब बहुत कंजेस्टेड हो चुका है। तो आई एम फीलिंग लिटिल कंजेस्टेड इस जहाँ मेरा घर है उस एरिया में। नॉट गुड। वेट कर रहा हूँ मैं मेरे जॉइनिंग लेटर का, खुद एरिया में जाके सांस लूँगा। Hmm. Have you guys been playing any games recently? I know you have been playing जैसे Lethal Company. हाँ You said that ki like hasn't been cheating on you wala. I know you've been seeing her. How could you do this to me? ऑन दैट नोट एक्चुअली हमने अभी तक वो बैकरूम्स का गेम खत्म नहीं करा है, जो सेकंड हाँ वाला भाई हमने No, किया I था। honestly do not feel like going back to it. क्यों, इतना अच्छा तो था वो। now we have to play from the start. No! Oh हाँ, by the way, like I don't think हम लोग वैसे भी ज्यादा खेले थे ना, like at max 1 hour we played or something like Yeah, that. खेलेंगे कभी खेलेंगे. I need a break from that थोड़ा. There's 2 consecutive backroom games. It's too much. हमने आखिरी बार कितने 2 महीने पहले खेला था, व्हाट डू यू मीन ब्रेक चाहिए It's थे still too much. तो From what I अदर remember, उसके puzzles भी I didn't weren't that interesting. I, I don't have a very much memory of that game. Anyway, क्या बोल रहा था तू तो? आई थिंक हमको उनका डेथ मैकेनिक अच्छा नहीं लगा था, मेन चीज़ सेकंड गेम को, बिकॉज उसमें हम रिवाइव नहीं कर पा रहे थे। एक बार हम मर जाते तो हमको अनलेस चारों मर गए, मतलब क्या है हम्म हमारे केस में तीनों मर गए, तब तक हम रिवाइव नहीं हो सकते थे। दैट वाज एन इशू। हम्म बट गेम प्ले प्लस वाइज लाइक अगर if हाँ Well, हाँ, और अगर if one person dies at the start तो फिर like kind of experience ही हो जाता ना, like दूसरे person को हाँ spectate करते रहो, और if in the on the off chance कि वो last survive कर जाता है तो like that person doesn't get to play that level, ऐसा feel होता है। by the way, you तो two can play without me. I wouldn't mind that.
Hmm. I don't think it will be as fun with just two people. Hmm. In those type of games, the main fun part is like communication. Ha, exactly. Hmm. You were telling me about the games you have been playing. ओनली लीथल कंपनी आई गेस हम दोनों गेंशिन खेलते हैं बट उतना मतलब ऐसे ही बस इसके कैसे बताऊँ मैं एक डेली टाइप का हमारा कमीशन जिसको बोलते हैं उसमें डेली कमीशन होते हैं Daily और quests. डेली क्वेस्ट टाइप का बस वो करते हैं हाँ वो भी हम मतलब ऐसे गेम प्ले टाइप पे नहीं खेलता हम ऐसे एज ए डिस्कशन हो पाए उसका एक मीडियम टाइप का रहता है वो तो आई वुडंट कॉल इट Basically, background noise while we talk. हाँ Hmm. You do not collaborate in the game. You play like individually. हम कोलैबोरेट Like, करते हैं बट उसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है उस मतलब गेम में hmm, And how is Lethal Company? लीथल कंपनी में एज आई टोल्ड यू the, ऑन द लास्ट पॉडकास्ट काफ़ी सारे अपडेट आए थे हाँ नए मून्स आए थे 2-3 विच वी एक्सप्लोर और कुछ नए आइटम्स आए थे लाइक अभी एक ट्रक आया विच इज़ वेरी फन और बाकी तो इतने कुछ आई डोंट रिमेम्बर Since you have already इंटरेस्टिंग talked about it from your हाँ. perspective, I'll ask Varun about it. Varun. I mean, I don't think कि Little Company का वो moons या फिर items were the fun part. I think the main like attraction to Lethal Company was कि you just enter in and you see your friend running and screaming and like यस why I think that was the fun part. And that's still there. That was kind of the appeal of PUBG too. Like, okay, other than it being a shooter and you collaborating with your teammates, uh, it Hmm. gave rise to very like funny and cool moments when like Hmm. random when like you would just laugh about it for 5 minutes, but it can like give you interesting stories. Did you ever play that game, Varun? PUBG? No. I Yeah. guess एक या दो match like I played because couple of my friends were like install करो खेलेंगे खेलेंगे that's why coaching में but then I never really played it without them. So हाँ, Hmm. just one or two matches, that's it. Yeah, it was kind of a routine for me, Bhatura, and Yash to play it play it every night during uh lockdown. It was pretty fun. Hmm. You mentioned a truck. What truck? ट्रक आ गया लीथल कंपनी में. यस Truck. Like, What? बेसिकली शिप से लेके जो उसका मेन एंट्रेंस रहता है हम उसका यूज़ कर सकते हैं ऑन पेपर वी कैन यूज़ दैट ट्रक आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बट उसके कंट्रोल्स बहुत जैंकी है एंड आई गेस उसका मेन यूज़ ऐसे ही कुछ तो भी फनी मोमेंट्स निकालने के लिए एटलीस्ट हमारे लिए Hmm. Okay, that's all the games you played. actually like, I haven't this is game उसका हम I haven't played the game but recently उसका एक gameplay देख रहे थे. It's called Fears to Fathom. Fears to तुम Fathom. लोग like सुने हो क्या? No. Hmm. It's one of the greatest horror games. I mean, one of the greatest नहीं बोलेंगे, but one of the most interesting horror games.
इसमें लाइक अभी उनका मेन प्रेमिस होता है कि एक इंडी कंपनी है, इंडी स्टूडियो है, एंड पीपल अराउंड द ग्लोब दे सेंड देयर लाइक हॉरर स्टोरीज, मतलब हॉरर स्टोरीज एज इन कि उनके साथ लाइक हॉरर एक्सपीरियंसेस जो हुआ है, लाइक जो रियलिस्टिक अबडक्शंस हो सकते हैं, या फिर हाउ कोई हाउस में होम अलोन और उसमें कोई ब्रेक इन कर रहा है या कोई क्रीपी इंसिडेंट होना, एंड वो चीज़ वो डेवलपर्स अगर उनको अच्छा लगे वो स्टोरी, तो दे एनिमेट द एंटायर थिंग इनटू अ गेम एंड यू कैन प्ले दैट गेम. That's such an exciting concept. What the hell? हाँ, दैट्स अभी आई थिंक 4 या 5 एपिसोड्स आए हैं, और उसमें हर एक इंडिविजुअली लाइक अलग अलग Wait, स्टोरीज है सेंट बाय देयर फैंस. I'm looking at it. Is this free? आई डोंट थिंक, आई एम नॉट श्योर. It looks free. Like this, I feel really interested in a game like this. That's a very हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. That is actually a pretty interesting premise. Home Alone. वेट, आई एम Oh, शॉक्ड कि उद्दू तो नहीं सुना है कि. मैंने सुना है, मैं यूट्यूब में ऊपर अच्छा. रिकमेंडेशंस आते हैं, बट आई नेवर वॉच्ड इसका गेम प्ले या फिर so अच्छा. रिव्यू. like there seem to be like multiple parts of it. Uh, all of them are pretty cheap. एक free है उनमें से. I'm not sure how it हाँ, works आई out. गेस यू हैव टू बाय द एंटायर ये. Oh, I think one of the episodes is free, and then the other episodes you have to buy them. Okay. I will at least हाँ, try one of अभी these. ये recent वाला आया था, वुडबरी गेटअवे वाला. That's the one I was watching. Oh, I'll play the first one. It's called Home Alone. Hmm. Huh. Uh, thanks for the recommendation. Uh, did you have anything else to say about that? You were watching it? Hmm. हाँ यार, that's it. Oh. एक बहुत interesting concept लगा था तो. But Although, remind me, did I talk about Slay the Princess in the last episode? Did I talk about finishing it? आई थिंक तूने फिनिश नहीं करा था उस टाइम में, तूने सिर्फ मतलब एंडिंग तक नहीं पहुंचा वो गेम के. आई थिंक तूने कुछ राउट्स एक्सप्लोर करा था. Have any of you heard of Stanley Parable? Parable? I has हाँ हाँ I हाँ have हाँ, seen yes the yes whole yes. gameplay. I have Yes. played. हाँ, I same. have played that game. इसके like college के time में. And this like uh, uh, game can be compared. Like in its nature, these both of these games are comparable. Yes. It has a slightly more horror tone to it, although it's not really scary at all. I guess you can say that about Stanley Parable. I'm not sure. This Parable 2. एक minute, let me look up the pronunciation. वरुण, तूने देखा है स्ले द हाँ जी. प्रिंसेस का Parable. गेम? What the fuck? Parable. Parable. Parable, Parable. 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 Okay. बराबर. Stanley Parable. I guess you could say that about that game too. That sort of is, from what I remember, it slightly delves into being horror as well. Like, sort of. Stanley, I It's don't not remember it scary, being. but like by the mood it goes for. I don't remember, but On that note, तूने कब खेला था ये स्टैनली? I think college के first year में. बिकॉज आई हर्ड कि उसके कुछ टाइम पहले कुछ वो एक नया sequel आया. DLC आया था. Sequel. That came after I had played. Like I think pretty much like soon after I finished playing that game.
वो मैंने नहीं खेला है. I've heard good things about it. Although I did find it interesting, Stanley Parable. Uh, I did not feel the desire to explore it any further. Like it just didn't like it that much. It's a good game, but I guess maybe at the time. But Slay the Princess is similar. Also, there's a narrator which you talk to, and the narrator is trying to convince you to uh, kill this princess who is tied up. wait. Before we talk about it, should we talk about it? Because वरुण ने अभी नहीं खेला है इस गेम को. Well, Nothing game. I हाँ, I've not seen anything about it. ah, I'll not ऊपर ऊपर से I will discuss. I mean, I guess I will not talk about it much. Like you are given the the task to slay the princess by the narrator. You're given choices of what you want to do. It's up to you what you do, and that's decided through lists of dialogues. The path you're taking, and then it gets weirder. It's one of those games where you are stuck in a loop. You're going through the same Oh, event. hmm. Hmm. If Varun, if you do feel interested in it, I reckon. Do you like Stanley Parable or the idea of it? हाँ, I did like it when I watched it. I think Hmm. very long ago though. I recommend you playing Slay the Princess then. It's a nice Ha, game. I think this is like the third or fourth recommendation I've got for that game. Ah, hmm, nice, हाँ, nice. एक तो उद्दू किया था, एक मेरे भैया की That's ऐसे the और एक game I और pretty much I guess finished on the and day after we recorded that podcast. Hmm. mm-hmm. And then I decided I had been thinking about this for a long time. I've been wanting to do this for long. And I decided to play the entire Metal Gear Solid series, Yes. starting with the first one from 1998, Metal Gear Solid. Wow. I can say that without say this without much hesitation that it's the best game. Like it's my I've ever played for, and in my like for me personally, it's the best gaming experience I've had. I'm not a person who enjoys games. I usually whenever I'm playing games, especially single player games, I play it out of necessity to I feel the need to explore this form of media. I don't, but I don't essentially enjoy it as others seem to like. For comparison, people who have been playing video games ever since they were children, like small, they've had a console in their childhood. I didn't really play many games अपने बचपन में, so it's something I picked up much later in life. But yes, a lot of times I don't really enjoy games, uh, especially action games in which you have to fight uh, NPCs. Uh, those are the parts which I'm always waiting to just end. And the which one would argue is the meat of those games, the combat. I think this is one of the reasons I appreciate Metal Gear Solid or a game like this more because
It is the quintessential stealth game where you aren't like Hmm. uh, you aren't forced to fight others. It's actually uh, you're pushed towards using stealth. Uh, what from what I understand, Hideo Kojima, the creator of this game, is a huge movie buff. इसके पहले I've tried playing his most recent game, Death Stranding. That's a really weird game. Hmm. क्या premise होता है उस गेम का? मैं सुना होगा Hmm. कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। It was a really popular and polarizing game. Like some people really liked it and others hated it. Like it's a weird game. मैंने खेला, I found it wasn't really for me. बीच में I dropped that game. Uh, this is one of his initial games. Like not his first or second game, but it's still one of the initial games. And the series he's known for is Metal Gear Solid. Uh, so he is a huge movie buff, and these games, yeah, Metal Gear Solid feels a lot like a ridiculous action film. Like, there are characters with weird names and campy dialogues. Like there's literally a character called Deep Throat. The protagonist we are playing is called Solid Snake, and the our arch enemy in the game. Guess what his name is? Liquid Snake. and, and he turns out to be our evil twin. And why is he our evil twin? Because we aren't really a regularly born individuals. We were designed to be a soldier, as we find out throughout this game. Like we are like made from the DNA of this really soldier who is considered really good, who we have fought before this game, which we are told, and killed him, is considered our father. And there's this entire thing. The and essentially the reason uh, the arch enemies, Liquid Snake, is our enemy is that he holds a grudge against Solid Snake for a very weird reason. And uh, the reason he exists, Liquid Snake, is for Solid Snake to be what he is. As he describes it, when Solid Snake was being born, they were uh, they were I don't know, produced as twins. Like they give a really weird batshit nonsense reason, genetic reason for his existence, but they essentially say that the reason this guy existed, the entire reason this guy existed, to take all the recessive genes. So the other one could have all the dominant genes. That's not at all what those words mean. Because it makes no sense. And he holds a grudge against Solid Snake from for taking away everything from him before even he was born. I think I've given you a pretty good idea of
how ridiculous the story is. Yeah, why I like about this, what I like about this game is, despite feeling so much like a movie, there are really long cutscenes in this. It is one of the best games I've played at that is that is that is the best at being a game. I fucked up that sentence. Hmm. It's the game I've played that is the best at being a game. Okay. That makes sense. I Good game, remember good एक game. बार बचपन में like when Uddu was going on out of the many times he went on about Twilight Princess. He was talking about he was talking about why he liked Twilight Princess so much, and he talked about this particular moment where he had to cross a chasm and he didn't know how. He, I think, had an axe और आसपास पेड़ लगे हुए थे. Why don't you tell the story, Uddu? You probably remember it better. It's kind of मेरे को एग्जैक्टली समझना है तो कौन से मोमेंट की ठीक बात है, कर रहे मैं हो. बताता हूँ. You just let me know if I told it correct. एंड लाइक तो काफी टाइम तक वहां घूमता रहा कि उसके दूसरी साइड कैसे जाना है. यू हैव नो आइडिया. एंड देन आफ्टर अ व्हाइल यू चॉप डाउन अ ट्री. वो पेड़ गिर के it becomes a bridge and you have to cross that, and you thought that was really mind blowing because of how intuitive I it have no felt. memory of that. I have zero memory of what you are saying. That's what मुझे I I remember you telling me that. Anyway, the reasons I like Metal Gear Solid so much are similar to the reason you liked that game. uh, for that specific reason, because of how intuitive it feels, especially in its puzzles. Sort of like it's puzzles, you don't even realize that you're solving puzzles. Like, Hmm. for example, uh, you go through many buildings, वगैरह, you fight enemies, and during the climax, you have to stop this nuclear bomb from going out. And for that, you have a key. You need three keys, but you have only one card. And you find out the way it works is that uh, the key, that same key you have, is all the three keys, but they transform at different temperatures. So, like at a Hmm. normal room temperature, it's this specific kind of key. If it you cool it down, uh, it's it becomes a different key for as long as it's cool below that temperature. And if you heat it up, it's a different key. Now, you stay there, like you have no idea how you're supposed to. Like, तुम्हारे सामने बस computers है to insert the key. You have no idea how to do it until you realize you're in Alaska Hmm. and think that maybe you have to go all the way back to outdoors for the key to cool down. So I made my way back, पूरा बाहर through the corridors. Luckily, I didn't have to go all the way out. There was an open room बीच में जहाँ पे एक boss fight हुई थी. That's Hmm. that's cold, icy, and वहाँ पे I stayed for a while. I think एक आध मिनट के लिए I stayed with the key in my hand, and it transformed. Hmm. की लेके मैं भागा. I inserted the key दूसरे कंप्यूटर में, and uh, it worked. अब तीसरा कंप्यूटर बचा है, for which I need to heat it up.
I remember level के शुरू में there was this room जहाँ पर essentially there was lava around for no reason, no apparent reason. जिसमें मैं गलती से गिर गया था. That which is how I found out that it's lava. Now I make all the way run all the way back to that first room. वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहा and key transforms. फिर मैं वापस गया and insert the key. And there are like a lot of puzzles that feel intuitive like that. Like you have to figure out how to do it. एक point पे you're captured in a prison. Hmm. Uh, he- and one of the reasons people like Metal Gear Solid a lot is the from what I've heard is that multiple approaches they can take to the same thing. Like they can figure out their own way to go about things. We're captured in a prison. This guard, there's a single guard around us. Whoa. And at some point, I think he has to go to the bathroom. I think yeah, he has to go to the bathroom. And those duration, mein, I mean, it's a cell. There's a bed too. Those duration, may I hide under the bed. There's no s- sign, yeah, कुछ भी that you're supposed to hide under the bed. Uh, I think the only hint I have of hiding, the only reason it came to my mind at all was I think I might have seen a character, pehle, an NPC, in a cutscene hiding under a bed. Maybe that's how they primed the idea into my head. That's how that maybe I can hide under the bed. मैं जाके छुप गया बेड के अंदर. And it worked. वो वापस आया like where is this man? वो सेल वो के अंदर आया and we uh, get the guy and get out. We kill the guy and get out. Then I was watching random like a playthrough of the game. मैंने वही same stage देखी. At some point, this person found a ketchup, a packet of ketchup. I guess the person who was playing. What this man did was he poured ketchup onto himself and on the floor, I guess, and lied down as if on the floor, pretending he's dead. वो देख के भी गार्ड अंदर आए थे. So it's so weirdly intuitive in that way. Like like it gives a really good illusion of it being in the real world, almost as if you can do anything in this game, like an illusion of that. Hmm. Like it does this, does it better than any open world ever game has ever done. I do अच्छा तो think कि हाँ 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 बोलो बोल. बोलो. नहीं क्योंकि आई एम काइंड ऑफ गोइंग ऑफ टॉपिक तो तुम पहले बोल लो. जैसे तू बोला था पजल एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट ट्वाइलाइट प्रिंसेस कि हाँ उसकी भी आई रिमेम्बर पजल्स थे. देवर मतलब काफ़ी वो थे मतलब इंटेड जैसे तू बता उस टाइप के थे कि टू मेक प्रोग्रेस कि हम कोई रास्ता ब्लॉक देन हाउ डू यू फाइंड अ वे टू अनब्लॉक इट या फिर कहीं पे जाने का पाथ हमको क्रिएट करना समथिंग लाइक दैट. सो आई डिड लाइक इट. अभी के जो गेम्स जैसे फॉर एग्जांपल गेंशिन है. आई डोंट रियली लाइक द पजल इन गेंशिन बिकॉज स्टोरी वाइज वो कोई सेंस नहीं बनाते गेंशिन के पजल They जनरली. feel very gamey. That you're हाँ एग्जैक्टली. solving a puzzle completely detached from the game. हाँ ऐसा लगता है कि बस एक पजल फॉर द सेक ऑफ एडिंग अ पजल उन्होंने डाल दिया
somehow टॉर्चेस पे आग लगाने से सब दरवाजे खुल गए. Before we end the before Varun says anything about it, okay, he said he's going off topic. I have one final thing to say about the game. There was this one mission where you're captured, James Bond style, ऐसे wrapped to uh, held up on a platform, and you're being electrocuted, tortured by this man. Uh, the objective of this game is that your health is going down as you get electrocuted. कुछ rounds होते हैं for a specific time he electrocutes you, and you can use your willpower. You need to have a willpower to survive that. And how do you gain the prove your willpower in the game? Button mashing. Like, as your life is going down, you have to button mash जिससे पहले your life goes to zero. इसके I think 4-5 rounds होते हैं. Button mashing is one of the laziest, most despicable parts of any game. I hated it as well in this game जब शुरू में किया. I was like thumb से कर रहा था मैं. Oh, I have another thing to tell you. मैं thumb से कर रहा था. And let me just note it down. And thumb like इतना तेज नहीं जाता है ये ऐसे. There's only like I was dying जब मैं ऐसे कर रहा था. I thought I need to be clever about it. So I shifted my controls from the controller to the keyboard, and I thought I'll do it consecutively with both my fingers. Uh, I thought it would be faster. मतलब क्योंकि I have to press the space bar. So like when the other one is going up, the second one can go down. But that didn't work either. But for some reason that was slower than just thumbing the button. Like attach the controller again. I figured, instead of doing with the thumb, I tried doing it with the finger, as if you're fingering someone. ऐसे honestly, I would be lying if I said I didn't get that idea from there, because it's more natural to do this than this. Go on. Until now, this was the fastest abhi tak, but it still wasn't enough. But by this point, I was really invested in it. It wasn't a chore. I was like deep into solving it. And to give context, I have the option to not do this. Like if you give up, like you can just give up on that. That will take you on a separate route. And a lot of people do give up this point. But at this point, like I was curious about what how people deal with this. I went on Reddit and looked at the button mashing missions. They were all talking about their experiences of playing it on PS1 बचपन में अपने बहुत सालों पहले decades पहले, and वो अपने नुस्खे डिस्कस कर रहे थे, which I found really charming. Like some would use do it with a spoon for somehow, I don't know, कुछ weird नुस्खे बता रहे थे अपने. It was really charming. I didn't try any of that. I went back to my game, more inspired than ever.
Tried it a few more times before I figured something out. Oh, Doing this is very tiring, extended period of time के लिए, and it's pretty slow too. And I realized that I can vibrate my entire arm much faster than I can tap with my finger. Oh. oh. Like that, like मेरा entire like forearm would go up and down, and that worked. मेरा arm like it was essentially vibrating, and I got through it really easily with my friend. I won't give the game credit for this because I doubt that it was its intention to come up to make its audience, make its players come up with creative ways to do it or figure out their strengths or whatever they have that they can vibrate their arm really fast. Fingering power. Yeah. I but that was still one of the most memorable parts of the game for me. That like I still had to figure out like it. I mean, it was mashing is the uh, exact opposite of intuitive puzzles. But it was still really fun. But I had another thing to say. इसके अलावा I had to discuss a particular enemy. You get this psychic enemy who's levitating around the room, and उसके monologue में before the fight starts he tells us that he can uh, he knows anything we try to do, and पूरा monologue होता है उसका, and at some point he even breaks the fourth wall by saying कि oh, I'll show you how much control I am of you, uh, ऐसा कुछ बोलता है, and our controller vibrates. Okay, that is Oh. really cool. Hey, wait, this is an old game, right? उस टाइम पे haptics होता था हाँ, controllers पे. PlayStation 1 से ये Oh, haptics. okay. And Oh. yeah, my controller vibrated. This is the most difficult, like, and enemy I had the most difficulty figuring out. उसका अलग reasons हैं, like, okay, I'll tell you what you were supposed to. मैं बहुत देर तक आधे एक घंटे तक I was trying to fight him, and he was always dodging my bullets. Like he, uh, after a point, I figured out that he knows what I'm doing. Like every button I push on the controller, he knows that. And what I have to do is change my controller ka port. I have to unplug it and plug it in another port. Oh. Wait, that was the intended solution. Ha! That was That the is genius. intended solution. The reason, I mean, that's genius, yes, but it didn't work out that well for me because I'm playing it on an emulator. I'm not playing it on a PlayStation. I cannot just do that. Hmm. I tried doing that. Like I had to look it up honestly. क्योंकि uh, uh, क्योंकि I even tried changing मेरे button mapping के वो uh, Hmm. uh, कि buttons अलग हों, but yeah, anyway I even tried playing on keyboard for that fight, but it didn't work. Hmm. Like there's a
work around to that if this is causing problem वो कुछ statues destroy करके you can beat him, which is like just a safe thing, just in case you are unable to change ports for some reason and you still need to get through the fight. I had to do that, but still, imagine playing on a PlayStation and figuring out I need to change the port. Yeah, that's really cool. Hmm. Yeah, that's it. I'll stop going on about the game. Varun, you had something to say. Like on the topic of intuitive puzzles, I remember this एक game था Life is Strange करके, which I played I think in fifth or sixth grade. Fifth और or अभी तक it's sixth? still one of हाँ and it's still one of my favorite games ever. I've heard of that game. इसमें like हाँ इसमें था it's about कि दो best friends रहते हैं and one of them like moves away for a really long time and when she comes back to her hometown तो she finds her other best friend कि like she went through a lot of stuff and everything but they get to reconnect but the first day कि वो school enter करती है and she sees her through like I don't remember कहाँ से but like she was hidden somewhere और her best friend like gets killed in front of her Oh, but Oh. I don't think कि major spoilers है but और कोई एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं बताया जाता बट कुछ होता या फिर मे बी आई डोंट रिमेम्बर बट उसके कोई पावर्स आ जाते हैं टू रिवाइंड टाइम बट ओनली फॉर लाइक वेरी शॉर्ट ड्यूरेशंस लाइक 10 seconds पीछे जा सकते हैं टाइम पे तो इट वाज लाइक दैट कि बहुत सारा लाइक पजल्स भी था जो सॉल्व करना था इंक्लूडेड दैट काइंड ऑफ मैकेनिक और उसमें था कि लाइक द गेम डजंट टेल यू कि क्या एग्जैक्टली क्या करना है यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन जस्ट लाइक द पहले तुम जो बोल रहे थे तो उसमें लाइक हो सकता है कि एक कोई एनपीसी जो तुम्हारा हेल्प करने वाला है शी गेट्स हिट बाय फुटबॉल तो she'll get mad and she'll run away but if you rewind time and save her she will help you वैसा टाइप का तो आई थिंक that was one of the first games which I played that did that तो इसलिए मेरे को बहुत like mind blowing लगा था apart from the music soundtrack and storytelling it's really one of my favorite games तो, I had the impression that that game was sort of like a visual novel. Uh, हाँ एग्जैक्ट वो भी वैसे भी बोल सकते हो कैन से दैट इट्स अ विजुअल नॉवेल बट उसमें पजल्स एंड काइंड ऑफ ओपन वर्ल्ड भी है काइंड ऑफ आई एम uh, सेइंग क्योंकि okay, लाइक completely open world नहीं है but it's हाँ okay, you can roam around. हाँ yes Nice, nice. Yeah, did you guys watch? Moving on from games, I guess, unless you guys still have to say something. Hey, right? Hey, did you watch any movies or kuch recently? I don't know if like the thing I watched should be called a movie or not, but I guess Uddu Kai dropped a message ki I found a movie. It's about ki a Japanese director. He's he's shooting a movie about a zombie apocalypse in the middle of nowhere. And while he's Um, recording the movie, while they're shooting the movie, एक actual zombie apocalypse हो जाता है. ah, And like it's one of the silliest things I watched. Like, like first of all, ki this is the first zombie encounter. She's like, oh, acha, wait. I thought like जो characters है, they're like, कि, oh, they started shooting already. Okay, so I guess that's a new zombie. Makeup इतना अच्छा किसे हो गया? And they're like randomly approaching the zombie and talking to it. And then कुछ time के बाद उनको एक हाथ मिलता है, like a hacked off hand. Human hand and they're like yeah, okay this must be a prop for a movie huh and then they figure out no it's actually human arm. how does that play out further later in the film? Like I understand like how Huh, the premise interacts with the zombie apocalypse, but how does that work out in the further huh, into the film? that's the thing it's not actually a fully fledged movie it's just 30 minutes of
like a short, it's a like It's a a short short film. film. So or हाँ, तो like entire thing takes place in like abandoned factory or something, which they say कि हाँ यहाँ पे like वर्ल्ड वॉर के टाइम कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स चलता था, like really cliche stuff. और हाँ, एक और चीज, like zombie apocalypse, when you think of a zombie apocalypse, how do you think it starts? Like Virus हाँ कोई, breakout. हाँ, if you think a movie something like 28 days later कि कोई monkeys पे experiment कर रहा है, वो breakout हो गया. If you think something like वर्ल्ड वॉर सी, उसमें कैसे हुआ था, लाइक समथिंग होता है, बट इसमें होता कि अपेरेंटली एक डायरेक्टर, एक रूमर फैला हुआ था कि इफ यू चैंट अ सर्टेन स्पेल, zombies would like get up from the or like if you sacrifice someone's blood and chant a spell, the zombies would, from that time of the experiment, they'll just get like awaken Zombies you need to basically. exorcise. Yes. Ah, और हाँ, एक और was it चीज, fun? like it's not, It sounds like you had fun. it was it was a fever dream, let's just say that. like वो रिकॉर्डिंग भी, इट्स सो bizarre क्योंकि इट्स लाइक कि उन्होंने एक पर्सन के ऊपर बॉडी कैम फिट कर दिया, एंड दैट पर्सन इज रनिंग अराउंड, एंड पीपल आर लाइक ह्यूमंस आर इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन, but for some reasons the zombies are completely ignoring that person. Is it first person? हाँ. पूरी film first person में. Yep. Ah, interesting. I guess I downloaded the Blu-ray version with something like extras. तो उसमें वो बोल रहे थे कि they were supposed to make a short film for 30 minutes, like without any cuts or anything, and that has to be live streamed to a live audience. This is what they created. It's Nice. called One Cut of the Dead. अगर देखना है तो it's only 30 minutes, but really bizarre. तो इसमें बीच में कोई वो भी नहीं है, आ, cuts. Mhm. Ah, is it पूरा one one shot? short film है, हाँ. Is हाँ, it, one does it shot, yeah. make create the illusion of a one shot या फिर it's actually one shot? It felt like one shot and they called it a one shot. So, Okay. I mean, that could be part of the like movie, but Mm-hmm. I think it was one shot. Have you guys watched any other one shot films? I मैंने think this देखी was the है। first one. Uh, हम्म, yeah, I watched this one shot film. Uh, I mean, one shots in general feel like a gimmick. क्योंकि I mean, they are a gimmick, sort of. You do it for the sake of it to make it seem cool. It does look cool, but a lot of times it doesn't really fit the story as much. There was this film I watched with Yash. I don't remember the name, but it follows a restaurant, and we know that being a chef or working in a restaurant is one of the most stressful jobs a person can have. Like it's like famous, that job is famous for that. And the one shot worked really well in that film. And the actors were also really good. What else have you guys been up to recently? मैंने मीडिया के नाम पे तो इस टाइम पे चेस का ओलंपियाड जो चल रहा है वही देख रहा हूँ। Mm-hmm. 11 days का होता है इसका। अबाउट 150 कंट्रीज की टीम्स होती है, टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं और एक दिन में 4 प्लेयर्स खेलते हैं। तो उसका टूर्नामेंट चल रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एज ऑफ नाउ अभी आज इंडिया का मैच था यूएस के साथ, जिसके कारण से मैं ये पॉडकास्ट जो लेकर आने वाला था, बट ओके।
हम्म, तो अबाउट इनके एक एक मैच 6 आवर्स चलते हैं, शाम को 6:30 को शुरू होता है, करीब 12 बजे तक चलते हैं इनके मैचेस। इंडिया काफ़ी अच्छा खेल रही है। तो ना मैं चेस में जब भी हाँ, टॉपिक बाय द वे निकालता यू हूँ सेड, लाइक, हाँ हाँ, तू बोल रहा था कि like later on you revealed ना कि तुम्हारा chess का tournament you had to watch. So I'm beginning to suspect कि there was no chess competition, I mean coding competition today. नो नो आई डिड नॉट लाई। जिस दिन मैं बोला Conspiracy. कॉन्टेस्ट है, नहीं नहीं, उस दिन सही में मेरा कॉन्टेस्ट है। आज भी कॉन्टेस्ट था एक्चुअली, मेरा आज का प्लान था कि कॉन्टेस्ट देता हूँ, बट स्कूल डे। सो भी करेंटली इंडिया टॉप पे चल रही है, एंड आई थिंक अभी तक के हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारी टीम में अभी तक की, जितनी इंडियन टीम रही है उसमें। Hmm. दैट इज गुड। एंड लास्ट टाइम जो हुआ था टूर्नामेंट हमारा चेन्नई में हुआ था, एंड आई थिंक वी गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल इन दैट टूर्नामेंट। इस बार इट लुक्स लाइक वी विल गेट अ गोल्ड मेडल। कौन सा तुम बोला टीम्स है इंडिया वर्सेस? यूएसए। So we have Bukesh, who is the world championship challenger, वर्ल्ड चैंपियन challenger। नवंबर में मैच होगा जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है डिंगलेरन के साथ, फॉर द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चैंपियन। And we have Varun and we have Vidit. We have Arjun, who is I think currently number 4 in the rating, and we have Hari Krishna। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। मैं जब भी चेस की बात करता हूँ मुझे लगता है कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा सुनने। Uh, that's not true. Like because we were talking about video games, we can somewhat relate कर सकते हैं to some extent, but when I talk about chess, it feels like nobody can relate really. I mean, I think there's a way, or there's always a way to talk about your interests in a way, in a manner that you can capture the interest of people who are less familiar with the uh, hobby or the niche. I will talk about कि मैं सबसे अभी तक के टूर्नामेंट का इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा रहा। तो अभी कुछ दिन पहले हमारा मैच हुआ था चाइना के साथ, एंड एज आई टोल्ड यू कि एक जब मैच होता है उसमें 4 गेम्स होते हैं, तो 4 प्लेयर्स हमारी टीम से खेलेंगे और 4 प्लेयर्स अपन की टीम से खेलेंगे। तो 4 में से हमारे 3 प्लेयर का ड्रॉ हो चुका था। लास्ट प्लेयर बचा था गुकेश, जो कि फर्स्ट बोर्ड पे था। जो फर्स्ट बोर्ड पे होता है जनरली अपोन, अभी हमारे इंडिया का जो हाईएस्ट रेटेड प्लेयर वो थर्ड बोर्ड पे खेल रहा है, बट बाकी सारी टीम्स में जनरली फर्स्ट बोर्ड का हाईएस्ट रेटेड प्लेयर रहता है। तो गुकेश का अगेंस्ट था वे यी, चाइना का, जो चाइना की टीम का हाईएस्ट रेटेड प्लेयर था, एंड वो गेम भी ड्रॉ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा था। इवन द कमेंटेटर्स वो बोले कि हाँ ये गेम तो ड्रॉ ही होने वाला है। वो मैच छोड़ के वुमेन सेक्शन में आके देखने लगते हैं, उनके मैचेस देखने लगते हैं। हाँ ये तो बहुत ये कैसा सेक्सिज्म है? नहीं सेक्सिज्म नहीं, मतलब जो जो मैच अनइंटरेस्टिंग सा है तो उसको हम कभी देखेंगे विमेंस मैच। नहीं वैसे जनरली स्विच करते रहते हैं, बट can you actually tell me something? This is something I've been curious about. स्पोर्ट्स में it somewhat makes sense कि women और men की लीग्स अलग क्यों होती है,
इट मेक सेंस क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ्स में काफी डिस्पैरिटी होती है एंड इट्स नॉट रियली फेयर टू पुट women against men. But why is that the case in chess? That is a very good question. So when I say women section, so if you know कि जो दूसरा section है, that is not called men's section, that is called open section. So from open it means कि actually उनकी टीम में women भी आ सकती है उनकी टीम्स पे, but ओपन टीम में वुमेन नहीं होती है क्योंकि इन जनरल वुमेन की अभी जो चेस प्लेयर्स उनकी रेटिंग काफ़ी नीचे है मेन के कंपैरिजन में. I think that is the case in other sports as well. I'm not too sure about it, but it's the same for other sports as well. हाँ बट Like, ठीक है. बाकी स्पोर्ट्स में यू कैन से कि हाँ फिजिकली वुमेन का स्ट्रेंथ जनरली कम रहती है मेन से, इसलिए उनका परफॉर्मेंस भी उन स्पोर्ट्स में कम रहता है. बट दैट शुड नॉट बी द केस इन चेस कि वहाँ पे कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ का कंपैरिजन नहीं हो रहा है. तो ओनली रीज़न उनका रेटिंग मेन से कम है वुमेन क्योंकि उतनी ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करती चेस में टू हैव दैट बिग ऑफ अ सैम्पल स्पेस कि इतने टैलेंटेड वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिले ऊपर हाई लेवल पे खेलने का. सो टू प्रमोट दैट कि हाँ और वुमेन पार्टिसिपेट करें हाई लेवल टॉप लेवल पे चेस खेलने के लिए, दे मेक अनदर वुमेन्स सेक्शन सेपरेटली कि वहाँ पे और दिखे और प्रमोट करे बेसिकली उनके खेलने को. do you have any women chess players that you follow? यस, अभी दिव्या देशमुख बहुत अच्छा खेल रही है. वैशाली हैं जो कि एक्चुअली सिस्टर है पन्नानंदा की, रियल सिस्टर, वो काफ़ी अच्छा खेल रही है. वो क्या नाम है, वंतिका है, वो बहुत अच्छा खेल रही है. हालांकि उसने आई एम रियली एंग्री उसके जो लास्ट गेम में तो उसने करा जीता हुआ मैच उसने ड्रॉ करा दिया. सेम फॉर क्या नाम है उसका, लास्ट नाम भूल गया हूँ, बट उसने एक ड्रॉइश गेम को हरा दिया. तो इसके कारण आई थिंक पोलैंड के अगेंस्ट हार गई थी हमारी वुमेन्स टीम लास्ट मैच. हारिका नाम है उसका. आई मीन काफ़ी अच्छे प्लेयर. अभी हमारी वुमेन्स टीम इंडिया की टॉप पे चल रही है वर्ल्ड में. until yesterday that was true. अभी आई थिंक अभी नहीं है टॉप पे, बट वो हमारे चेस में दोनों वुमेन्स और मेंस टॉप पे चल रहा है. सो आई वाज टेलिंग अबाउट दैट गेम वर्सेस चाइना. तो बाकी 3 बोर्ड ड्रॉ हो चुके थे. मुकेश का गेम बाकी था जो कि इट सीम लाइक अ वेरी ड्रॉन पोजीशन. एक्चुअली कंप्यूटर का एवेल्युएशन भी ड्रॉ था 0-0 मीन्स कि कोई किसी को हल्का से भी एडवांटेज नहीं है किसी की साइड कोई, तो थ्योरेटिकल ड्रॉ है वो. बट गुकेश केप्ट प्लेइंग, उसने ड्रॉ ऑफर नहीं करा और मतलब पीसेस एक्सचेंज करके ड्रॉ की तरफ बढ़ा देंगे. ही जस्ट केप्ट प्लेइंग. तो जो इंडियन कमेंटेटर्स उसमें जनरली 2 जन बैठते हैं, 2 कमेंटेटर्स. एक नेशनल मास्टर है साहिल टिक्कू नाम का, एक ग्रैंड मास्टर है सहज ग्रोवर नाम का. तो जो साहिल है उसने पूछा ग्रैंड मास्टर से कि व्हाट डू यू थिंक आर द चांसेस कि गुकेश इसे कन्वर्ट कर सकता है. एंड द ग्रैंड मास्टर सेड 0. देयर इज नो चांस कि गुकेश इसे कन्वर्ट कर सकता है. सो ठीक है, वो लोग चलेगा वुमेन्स के सेक्शन पे देखने के लिए. वुमेन का चलता रहा, उनके ड्रॉ हो गए सारे गेम वुमेन के भी. उन्होंने बोला कि ठीक है अब सारे मैचेस खत्म हो चुके, लेट्स जस्ट वेट टिल द एंड तक गुकेश का खत्म हो जाता है मैच. वो खेलते खेलते गुकेश ने समहाउ जो थ्योरेटिकल ड्रॉन पोजीशन थी उसने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जहाँ पे उसका अपोनेंट के पास कम टाइम था एंड उसकी जो पोजीशन थी while it was a theoretical draw it was difficult to calculate कि इसमें अगर तुम if you play correctly then it is a draw, but if you make a mistake it might give an advantage to Gukesh. उसने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी out of a completely drawn position और फिर उसे टाइम प्रेशर में डाल के इवेंचुअली his opponent does make a mistake और फिर गुकेश जीत जाता है.
and that was legendary. I one of those games जो like completely you remember कि मैं मतलब मुझे चेस के पसंद था उतना legendary game था वो. So like that was the most exciting moment in the tournament until now. हाँ, अभी जो चल रहा है तो उसी की बात कर रहा No, against China. अभी तो यूएस का अगेंस्ट चल रहा है वो मैच तो मैं देख नहीं रहा है। हूँ. ओलंपियाड का ही पार्ट था वो, ये पूछ रहा हाँ ओलंपियाड अभी आई थिंक 2 दिन बाद होगा चाइना के साथ. हूँ. It does sound very exciting. हाँ बिकॉज लाइक कई सारे इफ यू हियर ग्रैंड मास्टर मोस्ट टॉप प्लेयर्स के गेम्स ड्रॉन होता है और जो विनिंग गेम्स भी होते हैं वो इट इज थ्रू अ ब्लेंडर के अपोनेंट को ब्लेंडर करते हैं एंड वंस अपोनेंट मेक्स ब्लेंडर जनरली it becomes very one-sided and very predictable, right? But जो गुकेश ने करा कि it was a theoretical draw, but he created opportunities out of sheer determination कि हाँ वो आखिरी होप जब तक रहेगी कोई चांस बना सकता है. Exactly. Button mashing. That was really exciting. Yeah, that is all I have to say. Varun, you just texted the Kano avocado. Go I've ahead. heard that No way, story, like but tell us about it. हाँ जब रिसेंट हुआ ना हाँ आई जस्ट वांटेड टू मेक अ नोट ऑफ इट. बता बता. I did follow उसका क्या हुआ था. um, अच्छा सबको सुना है क्या? हाँ हाँ तो बता बता ना पर. I mean I guess हाँ तो वही like even though I didn't watch इसका videos like मेरे feed में कभी बीच में pop up होता था like उसका like eating वाला videos क्या mukbang और फिर like even like mental नहीं क्या what do you call it mental breakdown वाला videos आता था वो basically खा के वो drunk वाला phase में आ जाता था और like अचानक से like a couple I think last week or so he drops a video कि apparently जो 2-3 साल I guess 2 years से जो भी वो videos post कर रहा था वो all of them were pre-recorded और he was actually like losing a lot of weight during that and it just like completely blew my mind and I guess it was everyone who knew yes Nico That avocado. was that was really monumental. genuinely an amazing feat. Like losing that much हाँ weight in 2 years. Yes. I mean, from what I understand, he was, yeah, someone like he was a character that a lot of people pitied, and like it हाँ disgusted a lot yeah of people. Yes. His existence. He, uh, dude, his transformation. like एक point में I felt कि हाँ he's getting too like you know unhealthy I hope he fixes his life and अचानक से one day I wake up and I find that he's more healthy he's healthier than me now. लेकिन वो ओवर टाइम अपने ऐसे करते करते प्रोग्रेस करते करते दिखाता कि हाँ मैं हाँ प्रोग्रेस कर रहा हूँ. दैट वुड हैव बीन लाइक कूल ऑफ कोर्स बट उसने 2 साल तक प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे वो अपलोड करता रहा exactly उसको सबको this is डिसीव करते हुए और एकदम से मतलब अपने वेट का 99% वेट लूज करके सामने आया एकदम. दैट इज कमिटमेंट. exactly. और उसका लास्ट में भी लाइक वो वीडियो का नाम भी क्या क्या था आई एम 2 steps ahead और फिर लाइक वो पूरा स्पीच दिया था dude that was like रियल लाइफ विलन. insane. हाँ. Yeah, that was amazing. Uh, well, talking about
being in shape. Varun, did you join a gym in Bangalore? नो अभी अभी तो तो बहुत ज़्यादा ही बिजी चल रहा है ना, तो नॉट येट। फिर बट है, ऑफिस। हमारे ऑफिस में हाँ, अपेरेंटली है जिम, तो वो सोच रहे ज्वाइन करेंगे। हाँ ऑफिस बट में हाउ that's nice. हम्म हाउ डज दैट वर्क दो कि ऑफिस में तुम जिम के क्लोथ्स लेके जाते हो, फिर तुम चेंज करते हो जिम जिम क्लोथ्स में? हाँ, आई मीन हम लोग जब आई गेस, हाँ कल जब एक्सप्लोर कर रहे थे पूरा बिल्डिंग, तो उसमें देखे थे सुबह सुबह बहुत, आई गेस 9-9:30 इश आसपास लोग ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे थे, अंदर झांक के देखे थे तो ओके। तो आई गेस होते हैं कोई कोई जो पहले, या बहुत लोग का हाइब्रिड मॉडल भी होता है ना, तो उनको एक्चुअल आने का ज़रूरत होता नहीं है, बट वो फ्री में जिम यूज़ करने के लिए आ जाते हैं। तो I guess you हम can. लोग जो प्लान किए थे कि विल जस्ट ब्रिंग जिम क्लोथ्स, और उसका फिर पूरा वर्क हो जाएगा 5:30 पे या 5 पे, जब भी निकलना होगा तो वी कैन जस्ट गो टू द जिम, वर्कआउट करके फिर घर जाके नहा के हो गया ख़त्म। Mm, मे बी हम लोग वहाँ उस जिम का वॉशरूम्स नहीं घुसे थे, तो हो सकता है मे बी देयर इज अ शावर देयर, तो बहुत लोग अपने वर्क क्लोथ्स लेके आते होंगे और उल्टा करते होंगे। probably. Mm. Yesterday I made the mistake of going to the gym uh, with sort of a pulled back. You know, kabhi kabhi you wake up and you feel a tingling in your lower back. Like it's not a good day for your back. And I had to train my legs yesterday. And I went regardless. I thought I would इतना ज़्यादा heavy नहीं करूँगा, like if it's too much, but yeah, I didn't really do squats. मैंने leg press कर लिया उसकी जगह, but it did fuck up my back a lot. घर आके पड़ गया बिस्तर पे. I could not move all day. Yeah, yeah, yeah. Do not work out on a bad back. अभी भी है, अभी भी it hurts a little. स्पीकिंग ऑफ बैक, तुम लोग अभी भी टेबल नहीं लिए हो ना? आई गेस वरुण का तो आ गया मैं था शायद जमीन तेरे पे. हम्म टेबल, वरुण। नहीं, हम लाइक द एंटायर डे आई स्पेंट लाइक सिटिंग ऑन माय बेड। अगर हम उठेंगे तो मैं बेड में एक इंडेंट बना हुआ है ऑफ माय बट। That's why I sit on the floor. That's like I'm afraid of ruining this mattress that I have bought. I want to use it for the next 2 years. इसलिए मैं उस पे बैठता नहीं हूँ. मैं जमीन पे बैठा हुआ हूँ अभी. फ्लोर गैंग। And you know, I don't even have a table. मैंने रख किस पे रखा है ये जिसमें मेरी मैट्रेस आई थी, बॉक्स अभी तक मैंने बचा के रखा हुआ है. That's my setup right now. फिर तुम्हारा लाइक यू हैव अ वुडन समथिंग राइट, वुडन फ्लोरिंग। हाँ. हाँ, आई गेस दैट्स कंफर्टेबल है कि यहाँ तो आई हैव लाइक Yeah, टाइल्स, it's more तो इट विल comfortable बी अ than लॉट मोर tiles. अनकंफर्टेबल। Mm, उसके uh, have you hmm, I've been here for a month and I've been having problems with my bank. और किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी प्रॉब्लम है. तो से I have I'm having trouble like creating my online banking account. So and they are not being uh, that quick or great at their service of fixing this issue. एक महीना हो गया. I don't even have cellular service anymore because I cannot pay for it. तो मैं कल फिर से गया था बैंक and
Guy was like, yeah, they're trying to fix it, but he gave me a new debit card. He said that this one will work. बस मेरी अभी ऑनलाइन बैंकिंग काम नहीं करेगी. And to test that debit card, I decided that I'm going to go out and eat ramen that night. Uh, Dumpling? Ramen. It's a ramen. Oh, ramen. And I did not put any money in that debit card, in that bank account. I was I was a little surprised at first कि उसमें जितने भी पैसे थे, I don't know, कुछ $38 कुछ कहाँ से आए वो, I didn't know, but yeah. Then I realized that I've been working for the past week. Did I tell you this, Uddu? I don't think I told you about No. this. इसकी वजह से my schedule has been a little constrained recently. I started working at the dining halls of the university. Uh, like sort of had like to at least sustain my existence here If you're by working as a myself. what? Uh, as a like I work on different counters. Uh, कई बार like I worked at the salad counter. I worked at the pizza counter. I worked at the ice cream counter, What do you and do? I'm salad counter पे I'm cutting vegetables. Oh, Pizza counter पे I'm making pizzas. और the oh. pre-made base पे I'm putting sauce and cheese. Ice cream counter Oh. पे I uh, serve ice cream. And the most difficult of all and the most recent of all was the chicken wings counter. That is काफी सिंपल है वो काम. प्लेट उठानी है, उसमें चिकन विंग्स डालने हैं, देने हैं, देना है. दो ऑप्शन है चिकन विंग्स के. पीपल टेल यू कौन से चाहिए. That's it. But that is probably the most popular counter in that dining hall. एक दिन में I work 5 घंटे. I am only allowed to work 20 hours, both as an international student and I guess a student in general. I'm only allowed to work 20 hours in a week. Uh, I work 5 hours a day, and I think मैं 4 घंटे लगातार चिकन विंग सर्व कर रहा था. Oh. That was torture. Uh, but yes, आज शाम को भी 5 बजे की शिफ्ट है मेरी सैलड पे. uh, but yeah, anyway, वहाँ से like I will, I guess, also say that about this. It's like about the experience of working there. It's a slightly weird experience because it's not a part of our culture to make money like this, make pocket money like this. Like, Hmm. which I think is a bad thing. Like, kids, like, until this is the first time I'm making any money of my own. It's इतना late in life, and Hmm. यहाँ पर people do these jobs uh, throughout their teenage years to make pocket money, uh, to earn pocket money, and I know it's not wrong, but doing it at this age during my masters does come with a little bit of embarrassment, to be honest. It's a very irrational feeling
I guess. But I would say that it's an important experience for me. How did you To get to know even, about कि ऐसे कर सकते हो कैसे opportunity मिली? I talked with my roommate, told me about this. I'm looking for other stuff too, because it's very tiring to work in the dining halls. I would hope to work in a administrative position instead at the university. Hmm. As an international student, I'm not allowed Hmm. to work outside the university. I'm only allowed on campus jobs. Oh. Hmm. Yeah. So, yeah, that's where the money came from. Now I had to test this debit card. ये काम कर रहा है कि नहीं? I decided I'll go eat ramen. And as the time of dinner approached, I decided another thing. I know, and to talk about that, I'll have to go on a tangent. I know that Uddu doesn't care much for clothes. I Hmm. didn't either until a year or two ago, before I started developing some interest in that. Now, I consider myself somewhat interested in fashion. I give active thought to what I'm wearing, Hmm. and, and try 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 to wear interesting stuff. Uh, what about you, Varun? Where do you stand in this? I'm also like I guess pretty interested in fashion. Hmm. Were you always like this, या फिर you got like that after a point in college, या फिर? No, I guess like lockdown के time पे I guess I don't remember कि at what point I actually got interested in fashion, but I guess I हाँ like reels वगैरह से I got you know like पता चला उसके बारे में like people actually ऐसा करते हैं then slowly that developed into something. Hmm. Makes sense. I use like internet for me was my interest developed in fashion separate from the internet, but internet was very crucial in educating myself about it because there's surprisingly a lot to be educated about in fashion. Like stuff you do not give thought to. Like it's nice to have those things in Hmm. mind. And I have this thing when I buy new stuff, when I like unusual stuff that I am not used to wearing. I'm personally not used to wearing. I am initially a little uncomfortable wearing it in social situations. So uh, I try to wear them in less important, less consequential social situations usually. Just and if I'm going to meet a close friend uh, who won't care, so I kind of force myself to wear those clothes, which I found interesting. I'm just a little uncomfortable in wearing that. This cardigan I've had since last winter is one of them. Like I also went out with a couple of people with of my department about a week ago. We went out for drinks, and I'll share a picture with you to show you the cardigan I'm talking about. It's sort of a s- statement piece. It stands out. उसको ऐसे लटका रहता है. Oh. Like I Hmm. really like Hmm. that thing, but like you can imagine it being uncomfortable to wear for the first time because it stands out so much. This was not the first time I was wearing it. I was pretty comfortable with it. So I was going out to eat ramen last night by myself. I decided that this is a good opportunity to try something that I might have in wardrobe that I hesitate to.
wear that I would like to get it out of the way right now. Uh, and usually when this happens, I spend a lot of time trying to figure out what works with that article of clothing. Yeah. And this time, that article of clothing was some suits. Before I left India, my uh, parents insisted that I get some suits. So I ended up getting two suits, pure complete like jacket and pants, and two jackets, bus jackets without any pants. Mm-hmm. So I have those, and I felt kind of feel uncomfortable wearing them in public right now. So, क्योंकि I've never worn suits and they feel weird. Uh, so I thought to myself eh, that it would be a good idea to wear it. I mean, it does sound a little weird. अकेले कोई आधे घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं रामेन खाने बगल वाली शॉप पे पूरे सूट पहन के that that is helpful to me for me to able for me to be able to wear those clothes in the future more comfortably or wear them at all. Maybe I'll not end up not wearing them at all if I don't feel comfortable. I say, do you guys have anything? I'll talk more about the outfit, but uske pehle, do you guys have a similar thing with clothes? Not me. Hmm. Like क्लोथ्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो आई फील लाइक वेरी नर्वस तो लाइक जब कॉलेज में थे तो इट वाज ऑल द स्टूडेंट्स राइट तो इसलिए आई फेल्ट कंफर्टेबल लाइक ट्राइंग आउट न्यू स्टफ एंड एवरीथिंग बट आई फिगर्ड आउट कि बट आई रियलाइज कि जैसे ही आई वेंट बैक टू माई हाउस वेंट बैक टू माई होम और फिर या फिर जब व्हेन आई केम हियर द सेम एग्जैक्ट स्टफ आई एम स्केर्ड ऑफ वेयरिंग क्योंकि आई फील लाइक इट विल बी अ लॉट मोर यू नो पीपल like You it's not just students right it's like that you stand out. random strangers. Yeah, exactly. कॉलेज में मैं देखा Like I had this, बोल बोल। I had this overall, like jeans रहता है, but Overalls? उसके ऊपर पे You like, wore हाँ, overalls? yeah. I tried it, and it was nice wearing it. Like I would unstrap like the, वो the वाला things that come forward. एक साइड में जो तो खुला, हाँ 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 हाँ, हाँ आई yes आई रिमेम्बर दैट, हाँ यस। like usually I एक साइड पे लगाते थे या फिर दोनों हटा देते थे तो it will be like कि when you wear a t-shirt on your waist like sleeves को बांध लेते हो तो ऐसे टाइप का it kind of gives a look कि like waist heavy kind of yeah and your top half would be like you wear something skinny so yeah so there was one composition kind of in which I was interested in but I brought that thing I brought that overalls here but I'm too scared to wear it to anywhere. Do you have a picture? I don't think so. Ah, I'll have to look through my phone. that is fair. सेम एग्जैक्ट लाइक एक बैगी जीन्स भी है जो लाइक आई बॉट आई थिंक जनवरी और फरवरी ऑफ दिस ईयर तो लाइक सेम रीजन आई फील लाइक इट्स लोग देखेंगे फिर बोलेंगे कि क्या पहना है लाइक बोरा लाइक होता है ना सैक राइस वाला वो पहन के आ गया ऐसा लाइक कॉलेज में तो काफी क्रिएटिव आउटफिट्स पहनते थे लोग, हाँ I remember एक बार उद्दू उद्दू कॉलेज पहली बार जाने वाला था उसके पहले वी वेंट शॉपिंग टुगेदर इसकी मम्मी ने उसे पैसे दिए कि कॉलेज की शॉपिंग करके आओ तो हम दोनों साथ में गए थे इसकी कॉलेज की शॉपिंग करने he he found this t-shirt, a full sleeves t-shirt which was made out of some weird material मुझे याद नहीं आ रहा what आई it was रिमेम्बर आई called. रिमेम्बर। Like you would if you wear that you I think it makes you sort of look like you work in a circus. You know that kind of spandex. It looks kind of it's थोड़ा spandex जैसा दिखता है वो. And Uddu loved
that t-shirt so much. it It was, उसका I think, just a फैब्रिक black t-shirt. बोल बोल Oh, हाँ तू बोल. मेरे को उसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा था पहनने में दैट्स that is usually the most important factor for me कि कितना कंफर्टेबल है पहनने में Boxers. नो नहीं तो बॉक्सर छोड़ मैं कभी ऐसे हाफ पैंट भी नहीं पहनता कभी यू नेवर सी मी वेयरिंग पैंट्स पजामा Half pants. So, the like problem shorts to the people problem usually for find comfortable, right? I don't know Shorts, you don't find the like the कटे हुए पजामे तो होते हैं वो और क्या होता है? I know but मेरे को नहीं comfortable the है shorts I feel like shorts is completely different from boxes हाँ, they are different, but because what do you have against shorts? नहीं my point no was like कि मेरे को shorts जिस वैसे क्लोथिंग जिसमें इस पैर की ज़्यादा स्किन एक्सपोज रहती है मेरे को पसंद नहीं है दैट वाज माय पॉइंट Oh, I get that. But ठीक है, मच्छर what were you काटता है saying, Varun? the problem I have with boxes is that I have some things which I need in certain place. I don't want them going here. Big boy problems. And like, what if you're going around the house wearing boxes and like you decide to put your legs up? Nah, Like, क्या isn't that like I okay? get what you're So talking about. I did not know what this means What the hell? जब How do you लड़कियां not get? skirts मैं भी पहन करके बताऊंगा तुझे उद्दू. हाँ, करके बताऊंगा तुझे. like it's loose and you're not wearing anything underneath it. okay I guess That idea is very uncomfortable to me. That does happen sometimes. Anyway, उद्दू. ये तो तेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी वेट हाँ, that's what I'm doing. okay So I put on this jacket first to see how. That's not a very good picture of it, but yeah, I should. I guess this is better. Yes, I put on this jacket. क्योंकि अच्छा, I remember this picture. remember this picture कल खींची रात को मैंने. Wait, I feel like you sent this picture I've sent a like similar while picture buying the with a suit. different jacket. हाँ, Mm. हाँ, but with boxes. With boxes. Then I tried another jacket. ये मेरी ग्रे वाली है, lighter gray. जैकेट के नीचे Right. बॉक्सर पैदा वो कितना कितना अच्छा मजबूत लग दिख रहा है रहा ना? वरुण की शादी में जाना है ये पहन के. And ड्रेस कोड डिसाइडेड then I tried to figure out the pants I need to wear. एक point पे I even tried on a pajama. It didn't seem to be working out. I also have these formal shoes, एक साल पुराने, which I've only worn once for the like, sort of the farewell at my university. बहुत टाइम हो गया उस बात को. पिछले साल पहने थे, उसके बाद कभी पहने ही नहीं. So I shall show you my final outfit जो मैं पहन के I went to eat ramen बगल वाली शॉप पे. That picture was okay so that's
what you guys do at home. Hmm. That means. Hmm. There's a reason to that picture being clicked like that. Must I explain the reason to get the full extent of the outfit? पूरी दूर से फोन से नहीं खींच सकता। एक सेकंड तो फोन होल्ड भी नहीं कर रहा, फोन तो क्या टाइमर लगा के खींच। No, you can do this, right? ऐसे हाथ दिखाओ, Oh, it will oh, click the picture. I have a really Oh, bad अच्छा experience with that. हाँ. क्या? Yeah, what's your bad Varun experience? will tell you. Varun will tell you. Yep, I just remembered. I have to find that picture one second. And you know what? It immediately, after I looked at that picture, it immediately reminded me of Mr. Bean for some reason. And then I realized why it reminded me of Mr. Bean. It's this poster Oh. of Mr. Bean's holiday. Yeah. Oh, Yeah. by the way, for the context of readers, जिस फोटो को देख के हम हंस रहे थे अभी, अभ्युदय अच्छा मिला वो पिक्चर? नहीं नहीं, वो अभ्युदय वाली जो फोटोज ने डिस्कॉर्ड में डाला है उसके लिए। हाँ हाँ. अभ्युदय ने अपनी फोटो आई गेस अपने पैर को ऊपर ऊपर रख के रखा हुआ है। Oh, How do अच्छा I अच्छा. explain this? I'm wearing a black t-shirt and a dark gray jacket with, I don't know what, camel colored pants, very light camel brown. And उसके साथ I'm wearing off-white socks and black shoes. And to put my entire outfit on display, along with the shoes and the socks, I've put one of my legs up and made a really ridiculous face for some reason. Hmm. If you want a similar picture to what he's doing, you can look up Mr. Bean's holiday and you can look at the post. Anyway, outfit 1 घंटे तक ट्राई करते करते आई रियलाइज्ड 10 बज गया, वो रामेन शॉप 10:30 को बंद हो जाएगी. I go out, वॉक करना शुरू करता हूँ. I reach there in the 10 minutes. मैं अंदर घुसता हूँ and he says कि we'll close at 10:30. Do I want to take away? It's ramen. Of course, I'm not going to take away. That चाउमीन नहीं है कि फ्रिज में रख के अगले दिन खा ली. I it's I बोला I'll eat it right here. मैं अपने कॉर्नर में जाके बैठा. And these people seemed Japanese. Now, I'll tell you my experience with ramen. I don't really like ramen from what I've tried until now. Like I've tried ramen multiple times. तुम शक्ल क्यों बना रहे हो तू? Why are you shaking your head? बोल 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 तूने क्या है? थुक्पा खाया है. हाँ, but फिर भी I expect ramen to be better. I don't. I've tried ramen multiple times at decent restaurants in India, and it's never really been my thing. But I still keep trying in hopes of maybe finding a good ramen or maybe acquiring taste for it. Although I don't think this is one of those cases when I acquired taste for it, because there's nothing I dislike about ramen. I
it just doesn't feel interesting enough. Mm. This time I ordered tonkatsu ramen. I think it's made in Oh, pork beef, pork broth. pork broth Yeah. and served with pork pieces. Mm-hmm. They serve me in a giant serve it to me in a giant bowl. I think I've shared a picture, right? Yeah, yeah, वहाँ पे Hmm. 2 टीवी लगे हुए थे सामने. एक पे नारुतो चल रहा था, एक पे वन पीस चल रहा था. yeah. Very Japanese. And I think the people working there were Japanese as well. Mm. Every time a customer was exiting, and they would go, thank you." Exactly like that. Hmm. And this was undeniably a really good ramen. The broth, is case mein, maybe it was the kind of ramen I was having, but the broth in this case mein felt a little thicker. It wasn't thick still, it's still ramen, but it was heavier, sort of like more soupy than what I have seen in ramen usually. I guess one of the other things about having ramen in India is that I've probably only ever eaten chicken-based ramen, because no other kinds of meat are Hmm. really popular in India. Like, though you can eat pork in India, nobody really does. Uh, and those pieces of meat you see in the pictures of pork, I did not expect pork to taste that good. I mean, like it was still pork, but it was made so well. It was cooked so well, and they like well jaldi jaldi khaya because I didn't want to keep them from closing the shop. तो जल्दी जल्दी खा रहा था तब गरम रामेन में जैकेट उतारनी पड़ी अब मिडवे थ्रू हाफ वे थ्रू Mm. क्योंकि like it was too hot. uh, it, I ate it. I paid with my debit card and it worked, and I left the shop a happy full man. और मैंने खत्म किया उसे 15 मिनट में. Uh, how much did it What's your cost? $14, which is That. Mm. relatively inexpensive. It's expensive by India standards, yes, Yeah. but हाँ. with regards to how much things cost around here, that's not that pricey. Mm. By यहाँ the पे way, uh, हम्म, बोल बोल हम बोल. जब यहाँ एक बार गैंगटॉक गए थे, हम उद्दू और 2 फ्रेंड्स, तो हम भी वहाँ पे रामेन ऑर्डर किए थे. तो दैट वाज द थिंग, पोक टोंगोत्सु, जो मी एंड मेरे एक और नॉन वेज फ्रेंड हम लोग दोनों शेयर किए थे. तो हमारा तो बहुत अच्छा लगा था. बट फिर उद्देश्य, तुमको अपना एक्सपीरियंस बताना है. आई थिंक तो बताया था ना शायद. हाँ, मैं फिर बता चुका हूँ इसको. हमने ठीक है वेज रामेन ऑर्डर अच्छा, किया था, हाँ. मैं और मेरे साथ में एक और थी. हम दोनों वेजिटेरियन थे एंड वी ऑर्डर्ड वेज रामेन. तो लाइक व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट, इसमें थोड़ा नूडल्स था, थोड़ी सब्जी थी. बट एक्चुअली में थोड़ी सब्जी नहीं थी, उसमें पूरी सब्जी थी. और थोड़ा रामेन था. लाइक इतनी ज़्यादा सब्जी. इफ़ यू नो कि मुझे वेजिस बहुत पसंद है, बट आई कुड नॉट फिनिश इट लाइक इवन हाफ वे थ्रू.
उसमें पूरे फुल भिंडी के पीसेस डाले हुए थे, इतने बड़े बड़े, लाइक प्रॉपर लंबे लंबे पीसेस। पूरी पत्ता गोभी का पूरा ऐसा लग रहा है सीधे के सीधे डाल दिया उन्होंने। एंड आई थिंक वो सिर्फ स्टीम्ड था, राइट? हाँ, आई वो डोंट सिर्फ थिंक स्टीम उसमें था। लाइक ज्यादा सीजनिंग भी था। हाँ, उसके फॉर द ब्रॉथ उसमें कुछ स्पेशल नहीं था, लाइक इन द कंसेप्ट आई डू लाइक इट कि हाँ एक वेजिटेबल रामेन, दैट्स हाउ आई वुड लाइक इट टू बी, बट उसका अमाउंट आई गेस फॉर माई लाइकिंग 10 गुना ज़्यादा था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। I have never eaten veg sushi, but I've heard that it's good from people who have eaten it. I've heard that and they like it. I By the think way, I've Varun, eaten veg ramen pehle too. I think that was my first ramen experience as well. It was a veg Japanese restaurant in Ahmedabad. Uh, yeah, it was okay. I was too into it. क्या बोल रहा था वरुण? नहीं, उद्देश्य बोला था, आई Oh, नहीं गेस। मैं तेरे को एक्चुअली बताने का था वो स्टोरी जो मैं फोटो क्लिक करने वाली हमने बताई नहीं थी। हाँ, हमने फोन में, तेरे पास है क्या हमें पिक्चर पिक्चर वाला रहने दे, तू बस उद्दू? ऐसे एक्सप्लेन कर दे बिकॉज़ लिसनर्स को पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ। लाइक हम हम लाइक एक बड़ा ग्रुप था, हम लोग एक कैफे गए हुए थे, और लाइक हमें सेल्फी लेना था, बट प्रॉब्लम था कि फिट नहीं हो रहे थे। तो एक फ्रेंड था जिसके फ़ोन में वही फीचर था सेम, कि उसके फ़ोन में था कि यू हैव टू पुट योर पाम अप टू द स्क्रीन। आई मीन, अगर पूरा, हाँ, लाइक अगर हाथ खुला हुआ है तो इट विल टेक अ पिक्चर। वहाँ पे उद्दू फोटो ले रहा था, उससे नहीं हो रहा था। तो उससे हाथ नहीं तो खुल रहा था हम भी तो पीछे से नहीं, उस पता नहीं क्या डिटेक्ट नहीं हो रहा था, तो पीछे से हम लोग कर दिए, वही सेम जेस्चर किए, तो उससे फोटो खींचने लगा, और एक पिक्चर आया था जिसमें उद्दू was just with his hand up to the camera। उसका वो अजीब सा मुंह बनाया था, तो it looked like, you know, an alien saying hi to the human race। ऐसे किया था उद्धव तू ऐसे? नहीं, उसे उसका पूरा लाइक फिंगर्स ये था, क्लोज टुगेदर था। नहीं, सारा, हाँ, पूरा क्लोज टुगेदर था। तू बस, ऐसे फोटो खींच रहा था? तभी तो नहीं हाँ। खींच रहा था। ऐसे खींचना होता है। हाँ, हाँ। नहीं, हाँ, हाँ, उसके फोन में अलग था, आई गेस उसके में, आई गेस दोनों काम करता, I, बट हाँ। हाँ, I imagine दोनों काम करता होगा, but I would think this works better. Anyway, अगर वो पिक्चर मिलेगा तो I'll share you yes, हमने। do share that picture. Well, how was your college experience तुम दोनों का? From उद्दू ने मुझे बताया है कि your classes used to be pretty frustrating because कई बार professors were not very cooperative and made you do bullshit stuff. Apart from that, how was your college? It was really good, I would say. हाँ, आई थिंक रियली फन, Fun. बट वही है कि हमें लाइक 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 fourth, nice, fifth, sixth, seventh, we only got to experience only 3 semesters। Yeah. Hmm. Like, 3 कॉलेज का semesters. एक हाँ minute. What? हाँ हाँ, Oh wait, तुम्हें हमारा final. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हाँ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर्स ऑनलाइन थे, फिर फोर्थ का राइट एट द एंड वी केम टू द कॉलेज, एंड देन फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ सेमेस्टर कैंपस पे हुआ, एट सेमेस्टर वी हैड इंटर्नशिप्स। Oh, that sucks. हाँ, but still it was really fun। You guys went to monasteries a lot from what I understand. जब भी घूमने आते थे हाँ, तो एक हमारी फ्रेंड हाँ थी, तो
she like to visit monasteries and we were like okay चलो घूमेंगे. I thought Uddu was that friend. मुझे No, like उद्दू भी I guess interested था but हाँ, एक पर friend थी जो उद्दू के like पीछे ज़्यादा थोड़ी ग्रुप चार्ज जाता लेती थी. पूरा. वैसे इवन तो हम इतने टाइम तक सिक्किम में रह रहे थे तो बहुत ज़्यादा घूमने हैं सिक्किम में. हाँ, I think 3-4 बार ही वहाँ पे एटलीस्ट गया हूँ मैं. What? I guess हमारा मेन प्रॉब्लम था कि लाइक मैं और उद्दू बहुत ज़्यादा मोशन सिक हो जाते थे. एग्जैक्टली हम वो मॉनेस्ट्री पे जब गए थे जो 20 मिनट दूर था आई थिंक हमारे कॉलेज से सिर्फ उसी में हालत खराब हो गई थी मेरी और तेरी भी आई थिंक हम दोनों ही खराब हो गई थी. हाँ. आई गेस यही मेन रीजन था कि हम लोग क्यों ज़्यादा नहीं घूमे थे बिना क्योंकि हर एक चीज़ के लिए लाइक बहुत लाइक एडवेंचर करना पड़ता कार पे. बिना फोन चलाए तुम्हें मोशन सिकनेस हो जाती है. यस सिर्फ बैठे रहना हाँ, था. आई मीन कभी कभी आई एम फाइन बट मेरे को एल्टीट्यूड सिकनेस भी होता है और फिर लाइक हिल्स में तो बहुत ज़्यादा कर्वी रोड्स होते हैं ना तो उसमें और ज़्यादा ये हो जाता है एम्पलीफाई हो जाता है इफेक्ट. आई डिड हाउएवर फाइंड एन ऐप लाइक एक ऐप है जो लाइक लाइक मोशन सिकनेस को काइंड ऑफ प्रिवेंट करने का कोशिश करता है इफ Really? दैट मेक्स सेंस. लाइक हाँ लाइक उनका एक्सप्लेनेशन है कि द होल रीजन कि तुम मोशन सिक होते हो इज जो तुम्हारा कान के अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो एंड द थिंग्स यू सीइंग वो अलाइन मिसअलाइंड हो Yeah. जाते हैं लाइक. हाँ, तो उसी के लिए लाइक फ़ोन में जब भी देखते हो तो बहुत सब चीज़ स्टेबल रहता है ना तो अगर वो ऐप को यूज़ करोगे तो इट विल डिस्प्ले स्मॉल डॉट्स ऑन योर स्क्रीन और वो डॉट्स विल मूव टू द मूवमेंट ऑफ योर फोन. तो लाइक जब कार हिल रहा होता है तो लाइक तुम्हारा फ़ोन भी वैसा काइंड ऑफ इल्यूशन देता है तो it kind of circumvents I or maybe it's just placebo effect I am but I don't know intrigued. thoda sa I thought it I'm worked. intrigued, but Uh-huh. I'm too terrified to try it out. I tried a couple of times but I don't know कि वो app के वजह से हो रहा है और I'm just fooling myself Okay, कि okay. Answer into me thinking this. it's Why working. would it be any better than just closing your eyes? It won't be. हाँ, exactly that was my point But you don't want to close कि your eyes. but somehow it हाँ, I guess it's placebo ही है इसलिए but, You should. And what's even the point of doing that on an app? I mean, I think hmm, it's equally better, equally good to just look outside the window, right? It gives you no, the that same doesn't work effect, for me. right? Oh, That doesn't work for me. अगर window down रहा and I can have the gust of air in my face तब थोड़ा better feel होता है but otherwise doesn't work. like it would make sense it would make if you make a YouTube video shake like that. I mean, it's at least engaging. You might even want to stare at dots. Hmm. In my experience, even though वो reasoning ये बताता है कि illusion और उस कान के अंदर का वो नजर आने जाता है, even though I close my eyes, I still get motion sick. हाँ, I do not agree with that theory of misalignment. Yeah, I'm a little uncertain about that as well. Talking about bullshit professors. I also wanted to talk about my experience with how my experience with education has been here. एक महीना होने को आया मुझे यहाँ. उद्दू, you remember मेरा क्या हाल था पहले असाइनमेंट करते हुए. ये ऑनलाइन पर करा था तो उसको हाँ. Like I was absolutely miserable.
partly because I had no idea what was expected of me in the assignment. It was a linguistics assignment. I'm from a psychology background. यहाँ पे काफी सारे लोग are from a linguistics background, and they have a better idea of what they need to do than I do. And I had to start from scratch. मेरे हाथ में assignment का paper था, and it made no sense to me what I had to do. I start पूरे दिन, I think from like 2 p.m. to next week 8 a.m. next morning ऐसा कुछ था वो, like, लगातार उतने मैं trying to figure out the assignment. I was absolutely miserable. और उसी subject का I did a second assignment पिछले हफ्ते, and that's probably the most fun I've had doing an assignment. You compared it with It was a problem very solving, right? Yeah, it was a similar assignment where you're giving data of sentences and you have to figure out some sort of grammatical rules. उन्हें articulate करना होता है. Uh, and I had so much fun doing it after I had some basic understanding of what to do. Like, I genuinely enjoyed it a lot. And I've been enjoying all my classes in general quite a lot यहाँ पर, because like some of them are uh, seminars. I think I've told you, like they're essentially discussions instead of classes. You like participate in the class. Someone is teaching. Even you even have to present sometimes, lead the discussion. Uh, I did that 2 weeks ago. Not very good at it. I'll do better next time. Uh, I and I also quite like the professors here. Like, they seem now. I admit that it's not just because of it being a Western university. Uh, I'm also comparing it to an undergrad course I did in India, and I imagine there's a huge difference in classes in an undergrad course and a master's course. A grad course, like the strength is much smaller and it's much more intimate, and that's smaller strength, but I still feel from what I've seen of master's students, I still feel that it's not that great in India as well, like even in grad courses. But, but at least for this particular program, the professors seem genuinely interested in teaching what they're teaching. And for example, ये syntax linguistics का जो course है, इसमें the professor tries really hard to just ask questions. He tries to make sure that it's the students who are figuring stuff out themselves. Like he would write a sentence on the board and tell people to tell him what they can figure out from this, and then he would write another sentence out on the door on the board and ask how this affects their presumptions, previous assumptions. It's a very interesting way to take the class, handle a class, which, to be fair, you can only do in a class of small strength. Not really possible in an undergrad course, but still, yeah, I'm impressed by how good I have it here. Like I have never felt like so interested in attending classes and doing assignments. This is a completely new feeling to me. Hmm. Mm. We are not jealous.
I think, Nee, I had this feeling once. yeah. First year, first or second year में we had a class called engineering graphics. तो उसमें we had to Uddu has stuff to तो say उसमें we had about it. I will say it later to let Varun complete. Dude, that's my favorite subject which I've studied my entire life. उसमें we had to basically, I guess, projections draw करना था कि correct me if I'm wrong उद्दू कि like कोई भी shapes है तो like I guess उनका like अलग नहीं हाँ प्रोजेक्शंस उसका ड्रॉ करना था लाइक अगर कोई लाइट का सोर्स आता है तो कैसा टाइप का वैसे कुछ था ना शायद Yes, वो दो I would totally हाँ know तो that. लाइक बेसिकली वही था और उसका हर एक असाइनमेंट जो था उसमें लाइक 3 or 4 शेप्स मतलब था और उनका हम लोग को एनालिसिस काइंड ऑफ कुछ करना रहता था एंड वो लाइक कितना मजा आता था मेरे को हम एक भी असाइनमेंट नहीं मिस किए थे और एवरी क्लास के बाद लाइक जमीन में क्योंकि चार्ट पेपर में करना पड़ता था तो वही जमीन में पूरा बिछा के लाइक आराम से 1-1.5 घंटे में मजा करते थे असाइनमेंट्स के साथ Hmm. हाँ तो दैट वाज इट Uddu, I your turn. I was the exact opposite of Varun. Like online mode, man, I did not find the classes interesting. Most classes, except I remember C, कि हमारे एक सर थे सुनील something sir थे. I only liked that class. Other than that, I was not interested. And in general, जैसे हमको बहुत से सब्जेक्ट थे इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल साइंस. आई थॉट कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ने आया हूँ. हाउ इज दैट रेलेवेंट विद दैट? तो पहली बात तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कोई बच्चा सुन नहीं रहा, टीचर को कोई मतलब नहीं हुआ, सिर्फ बोल के चला जा रहा है. तो मेरा एक हैबिट बन चुकी थी कि मैं क्लासेस को चालू करके छोड़ के चले जाता था. आई वुड नॉट पे अटेंशन. But even in that, there was a marking scheme कि हाँ वो हमको assignment दे देते हैं and we had to do that assignment. और हमको उसका I guess photos खींच के submit करना था उसका. And I used to do that for all the subjects कि हाँ at least marks तो मिल रहा है. Then came this engineering graphics. देख, I like drawing. मुझे draw करना अच्छा लगता है. But not this type of drawing. So when they give assignments, I just gave up. I just thought, no, I'm not going to spend time on this. And I did not do a single assignment. Not a single assignment. I think मेरे को उसमें जो lowest possible grade होता है वो मिला था उसमें. But at the same time, it was a non-credit subject as far as I remember. So it did not affect anything. So that was my experience with that subject. उसका एक दो assignment नहीं. Varun enjoyed it as a side quest. Uddu hated it as a side हाँ quest. एग्जैक्टली I think हमारे college में the only teachers which were genuinely interested in the subject were Gurun sir and Nandan sir. Gurun sir and Nandan sir and Chitrapriya ma'am. Uddu, can you fix your mic? तेरी आवाज Hello. कम Is it आ रही better है. now? अभी ठीक I है? am actually a little unsure कि तेरे mic से आवाज आ रही है तेरे laptop से. हाँ थोड़ा डिस्टेंट साउंड कर रहा है Well, ये starting से ऐसा हो रहा था कि अभी ऐसा कुछ है? Starting से थोड़ी low है आवाज. Well, I guess so. Just make sure. Varun, हाँ any other classes that stood out? हाँ हमारे आई गेस एक 6th या 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें जो
प्रोफेसर थे, आई मीन आई एम हेजिटेंट टू कॉल हिम अ प्रोफेसर, आई मीन टीचर भी नहीं बोलना चाह रहे उन्हें। लाइक बेइज्जती कर लाइक रहा है ऑल अभी। ऑफ अस, like all of us like couldn't even comprehend कि how he got that job. First of all, we had a theory कि maybe वो जो कॉलेज का डायरेक्टर है उसका बेटा या फिर कोई रिलेटिव को किडनैप करके रखा है, that's why he got the job. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि अभी तक वो कैसे हैं वहाँ पे। उनको कोई पसंद नहीं करता, and कोई he, टीचर उनको पसंद नहीं करता। ये and he's the creepiest guy, like not just in general, like towards women he's the creepiest person. हाँ, वो I- रिमेम्बर कि वो एक वो निकला था कि गंगोत्री को वो स्माइल हाँ, like करके। हमारे क्लास चल रहा था and he was strict about the timings. A group of guys came in like 5 minutes later and उनको वो भगा दिए, like डांट के in front of the entire class कि जाओ घर या वापस। उसके 10 मिनट बाद एक लड़की आती है, वो घुसी, वो स्माइल करके बोले हाँ कम इन। And all the entire class, he was like teasing him कि हाँ why do you do it करके, क्यों उसे ऐसा आने दे दिया, बाकी लोग को भगा दिए, and he just like didn't even answer, he just ignored everyone. that does not look good. That looks like I feel that like professors have the position to be really great, and like it's really easy for professors to just be the most horrible people in the world because हाँ. they just have way too much power over you, and these I imagine that these people are not used to having that kind of power, and they just completely mishandle it, and you cannot even do anything about it most of the time. If a professor has a grudge against you, he can fail you every semester. दैट हैपेंस। हम्म, बट इस केस में उनको वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर्स भी कोई पसंद नहीं करते थे। दे ऑल न्यू कि हाँ वो अच्छे नहीं है, वो क्रीपी है। और ऊपर से एक बार हम कंप्लेन करने गए थे, हमारी लैब चलती थी, उस पर उन्होंने शायद आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली उन्होंने क्या करा था, बट उसे से पढ़ा नहीं रहता है। नहीं हाँ वो पढ़ाते ही नहीं थे, बस बोल देते थे कि ये करो वो करो, हाँ, तो हमारी like without even giving instructions. 3 घंटे की लैब होती थी हमारी पूरी, और उसमें वो कुछ नहीं बताते थे। तो हम कंप्लेन तीन करने गए। घंटे की लैब 3 घंटे की लैब Yup. एवरी वीक। तो हम 3 days a week. 3 days a week. यस, Yup. 3 subjects, 3 labs. तो हम गए कंप्लेन करने कि ये सही नहीं चल रहा। मैं HOD के पास उस कंप्यूटर साइंस में हम उनने पूछा कौन से टीचर है, हमने उनका नाम दिया। शी जस्ट साइड, उन्होंने बोला कि हाँ वो बैड गाय है। मतलब इतने ओपनली। उनका वर्ड्स था, I don't want to ruin my day. Yeah, exactly. It's your responsibility to handle that. आई थिंक What do you उनने mean you don't देखिए एक want to लैब do में 2 anything? टीचर्स होते थे। उनने बेसिकली पता है क्या करा, उनने दूसरे टीचर को कॉल लगाया और उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप थोड़ा हैंडल कर लीजिए, वो सही से पढ़ा नहीं रहा। दैट्स व्हाट शी डिड। How was it handled then? आई थिंक अगली बार से आई थिंक वो जो दूसरी टीचर थी शी वाज अ लिटिल मोर एक्टिव इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बट उनको कोई कुछ बात नहीं करना चाह रहा था उनके साथ बेसिकली। उनको अलग समझना है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हर टीचर किसी को पसंद नहीं है, सबको पता है कि वो सही से अपना काम नहीं कर रहे हैं। वाई इज द कॉलेज कीपिंग हिम? तो जो वरुण की थ्योरी में वो काफ़ी एक्चुअली प्लॉजिबल लगती है कि वो डायरेक्टर के बेटे को किडनैप करके रखे।
Possibly. Well, I'm out of stuff to talk अच्छा about. हाँ Huh? like you said ना कि do you have any college stories तो उसमें I brought up this subject because एक story मेरे को particularly याद है यही exact teacher के class में like there's levels of being bored right कि when you're just okay I'll just have to get through this or you're just like एक स्पेक्ट्रम होता है बट उद्दू एक क्लास में इतना बोर्ड था कि वो रैंडमली पेन्स उछाल रहा था फॉर सम रीजन I do लाइक remember. हम लोग डेस्क में बैठे हैं वो पेन्स को उछाल रहा है जैसे सर पीछे मोड़ रहे वो पेन्स उछाल रहा कैच कर रहा है उछाल रहा कैच एक पॉइंट पे वो लाइक सारे पेन्स गिर के आ गए एंड ही वाज स्कोल्डिंग उद्दू अचानक से कि क्या कर रहे हो एक सिमिलर स्टोरी है 9th ग्रेड से। केमिस्ट्री की क्लास थी। टीचर पढ़ा टीचर ने पढ़ाया, बेल बजी, टीचर लेफ्ट फॉर द डोर। उद्दू फ्रंट बेंच पे बैठा था, एक कॉर्नर में बैठा हुआ था फ्रंट बेंच पे, एंड ही हैड दिस हैबिट ऑफ डूइंग दिस। नाइन्थ ग्रेड में ही हैड दिस रियली वियर्ड हैबिट ऑफ डूइंग दिस पूरे टाइम। What? पूरे time and ऐसे बतख की तरह ऐसे ऐसे करता रहता था, अपने हाथ wait, ऊपर नीचे फ्लैप करता, एल्बोज ऊपर नीचे फ्लैप करता था। wait, really? वो टीचर पीछे पड़ी, उद्दू को देखा, बोली देखो कितना खुश हो रहा है मेरे जाने पे। I don't remember any of that. You used to do this a lot. Why? What? Out of कोई रीजन नहीं, this was just a part of your existence. Okay, that's okay. नई चीज पता चल रही है मेरे को अपने पास्ट के बारे में। You don't remember the incident? I मेरे को कुछ ही याद नहीं जो तूने बोला ये वाला। I do not remember anything like that. वो टीचर वाला भी नहीं, नहीं, कौन सी टीचर? केमिस्ट्री की टीचर थी ना। I think she had short hair. Oh, I think she I was an remember. alright teacher. I remember कि उनको मेरे से बहुत ज़्यादा क्रश था for some reason. I don't think she had a grudge against you. पता नहीं मेरे को पूरी मेमोरी प्रॉपर कि उनको क्रश था मेरे से। ज़्यादा जोर मत डाल दिमाग पे। By the way, Varun, I've heard all about Uddu की internship. How was yours? तू मैंगलोर गया था ना? हाँ मैंगलोर में वही मणिपाल पे कर रहे थे तो लाइक हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जो एचओडी एक मैसेज किए थे रैंडमली हमारे कॉलेज के कि जिनको नहीं मिला इंटर्नशिप इफ दे वांट ही कैन हेल्प आउट सर्विस कनेक्शंस तो लाइक आई रीच आउट टू हिम और वो मेरे को रीडायरेक्ट किए एक मणिपाल के प्रोफेसर के तो ही हैड अ स्टार्टअप तो उसमें मेरे को डाल दिए तो वहाँ पे लाइक आई गेस उतना कुछ ये खास था नहीं लाइक वी वुड जस्ट गो देयर छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो था उसमें करते थे बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो लाइक मी एंड अनदर लाइक पर्सन आई एम नॉट आई डोंट वांट टू कॉल दैट गाय माय फ्रेंड एनीमोर बट वो ये पर्सन ये क्या था? क्या किया? हाँ in the span of 4 months I met 2 people from my college there and I started hating them and in the exact same time span I spent more time with a person from my friend group and I grew to hate him as well. Oh. तो हाँ लाइक बेसिकली हम लोग वहाँ पे जाके एक पर्सन के पास गेम पास था तो वी वुड जस्ट प्ले मॉर्टल कॉम्बैट एंड हाँ आई गेस वी speed binge watched the entire SPD series by the way Oh, just randomly. how was that? You were a Power Rangers kid?
Yes, obviously. Abdul, did you watch Power Rangers बचपन तो में? भाई ओकेशनली, बट मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल what? फॉन्डनेस नहीं था उसके लिए। Same. I never. मेरा भाई used to watch it sometimes, and because of him, I did watch one of the entire Power Ranger series. That was Jungle Fury. Ah, Ooh. yeah. तो देखा है वो वरुण? हाँ। That's the only Power Rangers I मेरे watched. लाइक मेरे फैमिली में कोई भी फंक्शन होता था तो जब कजन्स आते थे तो मैं आई रिमेम्बर वंस और ट्वाइस हम लाइक आई गेस 5 या 6 लोग थे। हम लोग लाइक एक पूरा पावर रेंजर्स का एक स्किट बना के रखे थे और हम लोग पूरा एनैक्ट किए थे जस्ट फॉर फन। बिकॉज हम लोग सब कोई पावर रेंजर से ऑब्सेस्ड थे। So what else did you do? Game Pass, Power Rangers. हाँ वही बस लंच के बाद हम लोग लाइक पास में एक फ्रूट शॉप था। तो कभी कभी लाइक पहले हम लोग स्टार्ट किए कि कुछ लाइक एप्पल्स और ऑरेंजेस हम लोग लेके आए। फिर हम लोग सोचे कि और कितना पुश कर सकते हैं वो बाउंड्रीज। फिर हम लोग ग्रेप्स लेके आए और जो Wait, ऑफिस में प्लेट what रखा रहता था वो boundaries? लेके कौन सी boundaries push कर रहा है तू? कि ऑफिस में कितना खा सकते हैं। Oh, फिर हम लोग ग्रेप्स लेके आए और लाइक एक ड्रॉअर को वी यूज इट एज अ टेबल और फिर वहाँ पे एक ऑफिस का मेस या ब्रेक रूम से प्लेट लेके वहाँ पे खाते थे एसपीडी देखते देखते। एंड देन वन डे वी डिसाइडेड कि नो वी हैव टू गो फर्दर। हम लोग एक पूरा तरबूज लेके आए और फिर वहाँ पे काट के हम लोग ब्रेक रूम में फिर काट के उसे पूरा खाते खाते देख रहे थे। और फिर हम लोग ही नहीं हम लोग लाइक सबको बांट के भी खाते थे। तो लाइक हाँ वही था। at least तुम लोगों ने वो तरबूज तोड़ने वाला गेम नहीं खेला blindfolded. How long did you work there? 4 months, but I don't know if I should say work. But Power Rangers देखा. let's just say I did work. How was I mean, I did more than a lot of people, so yeah. hmm, how was working for a professor with a startup? That sounds like a weird combination. I mean, very like it felt like meaningless. हाँ, actually it felt like meaningless assignments, not gonna lie. Oh, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो आई डोंट नो व्हाई ही थॉट कि वो यूजफुल है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो आई फील लाइक इट वाज जस्ट कंप्लीटली ट्रैश जो कहीं नहीं जाने वाले हैं। बट वी स्टिल हैड टू वर्क ऑन इट बिकॉज we were employed there even though we didn't get any pay for it. so like, did he not take you seriously, or was he just giving you work on a whim? No, it he was being serious. That's the weird part. So But like, like on a whim, he would tell you to do stuff without thinking much, just because you're there. He would tell you to do this. no, like हम लोग तो जब आए थे तो like दो लोग हम लोग 4 जन थे टोटल। तो 2 लोग को एक पहले से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका था वो दिया गया था लाइक वो लोग उस पे काम करेंगे विच आई थॉट वाज शिट। वो बहुत अजीब सा बहुत गंदा प्रोजेक्ट था। बट फॉर सम रीजन वो प्रोफेसर को लगता था कि हाँ दिस इज माय मास्टरपीस फॉर सम रीजन। और इसके फिर लाइक हम और एक और फ्रेंड आई मीन वो पर्सन तो हम लोग दोनों भी लाइक एक स्टार्ट किए थे फॉर सम हाँ एट दैट टाइम इट फेल लाइक कि वो भी ऑन अ विम स्टार्ट कर दिया वो सेकंड प्रोजेक्ट। और लाइक इवन दो आई फेल लाइक कि हम लोग वो लाइक जो बेसिकली हाँ हम लोग सबको लाइक एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं कर रहे बट हम लोग सबको वो जो रिजल्ट है वो फैब्रिकेट कर रहे हैं। बाप रे. लाइक आई फील लाइक कि वो स्कैम हो रहा है वो प्रोजेक्ट वो दैट वाज जस्ट या। एंड फॉर सम रीजन ही वाज इम्प्रेस्ड आई हैव नो आइडिया लाइक क्या चल रहा था उनके ब्रेन में। बट हाँ इट वाज जस्ट अ वियर्ड एक्सपीरियंस। Like, hmm, that's what you get for having interns set up the pillars to your startup, I guess. Yep. Uh,
You talking about Game Pass reminded me of last night. I tried cloud gaming for the first time. Oh, Like I signed up for Amazon Prime इसको 6 महीने का ट्रायल रहता है स्टूडेंट्स के लिए तो हाँ. I signed up for that and उसके साथ लूना Amazon की क्लाउड गेमिंग नॉट जस्ट क्लाउड गेमिंग सर्विस है उस पे क्लाउड गेमिंग भी अवेलेबल है उसमें some games are available for free. One of them was Fortnite. I just, for the sake of trying it, I opened it. It was okay. Thoda, there was a delay. A part of what made the experience bad was that I was playing on a controller. I could not judge it too properly. It's a shooter. It's horrible on a controller, and I'm not in a habit of doing that. And Hmm. like थोड़ा डिले था बट लाइक इट बहुत ज़्यादा नहीं था नोटिसेबल था पर बहुत ज़्यादा नहीं था एंड आई थॉट that it would be pretty much gone if I attached it to an Ethernet as well, which was interesting. Hmm. Hmm, that's it. Addu, what are you thinking? About that, my headphone nothing on the audio. I checked the settings, and when I opened the software, it just said latest driver not installed. और मेरे को ऑप्शन भी नहीं दे रहा था वो चूज करने Oh. का. तो आई थिंक हाँ ये पूरी रिकॉर्डिंग लैपटॉप से हुई है, प्रीटी श्योर. उसको कुछ अपडेट वगैरह कोई करना पड़ेगा उसका सॉफ्टवेयर. कोई बात नहीं कोई बात. I think this might be one of the strongest episodes we have ever recorded, हमने जो पिछला and you fucked it कोलैबोरेशन up. करा था, क्या? हमारा पिछला कोलैबोरेशन था प्रणत के साथ में, उसके भी तू बताया था हाईएस्ट व्यूज थे. Highest views there, but I think that this is the most sort of well structured episode. Like there's a flow of content in a way that seems good, if you know what I mean. Hmm. Hmm. Varun, would you like to end this podcast? Would you? Uh, I don't know how to end the podcast. Don't worry, that's how we end the podcast every time. I don't know how to. Exactly. um, Bye. Bye. Adios.